Chalo. We'll start with OPM revision day 2. Okay, we'll wait for a minute, let everybody join in, and then we'll start. Okay. As I've already told you yesterday, in yesterday's lecture, that this is very important. The first 2 days, I've allotted 3 days for OPM. One day I've kept for buffer. So if anything remains, so we'll take it in the fourth. But I don't think that will come. 3 days will wrap up the entire OPM. Okay. I'll start taking a revision and all that what we've done yesterday, and then I'll take it back. Okay, let everybody come in, let everybody join in, and then we will take it ASAP. Okay. Once again, let me just turn on my this YouTube. Where is this? Okay, great. Chalo. Okay. Without wasting any time, we'll start with today's session. A very, very good morning to everybody. So, just a quick recap. First of all, tell me whether I'm audible. We have changed the mics, I believe. So, I think the voice should be much more crisp. Let me know that in the comment. Going ahead with this, we started with the CMA inter revision. We started with group 2 first, and then we'll end up with group 1. Okay. So, before Diwali, we started off with FM, then we finished FM, then we switched to audit, we finished audit, and then we started with OPM. Okay, just a quick reminder to everybody, those who have joined in now, or those who have seen this for the first time. Well, we have strategic management 1 day complete marathon. So if you're worried about strategic management regarding the chapters, whether how to do it, what are the important questions, what exactly to do, so boss, this Sunday is going to be strategic management. Okay, the whole day, as in what, till the time we complete the entire strategic management. So please keep that day reserved, and that day itself you should be completed with strategic management. Okay. Now, talking about our revision lectures which are going on right now, we are sharing the PDFs also, the notes which you're using over here. There's a link in the description box. You just fill it up and you just get the notes. Okay. If not, just put a call, because there are lots of people all over India who have filled the form and who are getting the notes. Okay, so there might be a delay of 1 day or two, not more than that. So please keep that in mind, that if the notes are not there, not coming from you, just give a quick call to the admin department of HGPA. They will take back to you very immediately. Okay, so on that note, we started with OPM, operations management. 60 marks is the syllabus, and yesterday we started off. So if you have not seen yesterday's lecture, I would please request you, please go there. The video is already there. You might see it in the playlist. Please watch that and then come over here. Okay. Our today's target, and also one more thing, I want everybody to be very active in your comment section. Simple. Okay. So today what we are supposed to do. Okay. Very, very simple. I've taken 3 chapters today in today's session. Okay. The first one is demand forecasting. Is demand forecasting. Is demand forecasting. Is demand forecasting. Okay. Now, one sec. What is this? Demand forecasting. Then we will take simulation. We will do simulation, which is very, very, very important. And then we will go on to the most favorite, and that is your CPM PERT. Okay. Now,
I've already told you yesterday why these 2 days are important. Okay, obviously the third day is important, but these 2 days are top priority. The reason behind this is just a quick recap. So what we are going to do today, okay? All these three chapters are going to come short in your examination, like 100%. If you pick up any model question paper, if you pick up any past examination paper, you will find either of this question or all of the questions in your paper. So when your paper is going to come, the December 24th paper, OPM, mark my words right now only, this is going to come. Okay. Now, many students, they know this chapter, simulation. They know CPM PERT, okay, because of network diagram. Everybody loves to draw network diagram. It's very simple, okay. Now, this is going to come for 7 marks. This is going to come for 7 marks. And boys and girls, there's a small chapter in your curriculum which says demand forecasting. It is to be solved by regression analysis. We use an equation and then we solve it. It's pretty simple. But what's the most surprising part? You pick up any goddamn paper, there will be this question on demand forecasting. Okay. So we're going to start our day today with demand forecasting. We'll be solving model questions also, and I'll be also solving the question which I have jotted it down from the past examination question. Let me just give you a brief idea of what I'm talking. So the first one is your this demand forecasting. That's what we are starting it. Just to give you a quick reminder, see, model question paper December 24, 7 marks. Going ahead, model question paper December 23, set 1, you'll find 2 sets over there. Again, they've asked the question. If I go a little bit down, the same model question paper December 23, set 2, same 7 marks question. If I go again, June 24, they had asked the same regression question, the demand forecasting. December 23, they have asked the question on demand forecasting. Ladies and gentlemen, June 23 also they have asked demand forecasting. Okay, so if you ask me, sir, what is the prediction? Should we waste time on this? Absolutely yes. Okay, whether I don't think you should use the word waste. I think you should use the word invest your time in this, and this is more important. Okay, so everybody, can we start with today's lecture? Okay, with your due permission. Now, सबसे पहले एक काम करते हैं. Demand forecasting. I'll talk about simulation CPM for the moment I get onto that. Okay, but the first thing I'm only going to talk about what demand forecasting only and only that. Okay, and also just a quick reminder to everybody. The answers are there in the PDF, but you know my style. I'll not go to the answers. We'll solve everything. Time जितना भी जाने दो आपने वो solve करना है, ठीक है? We're not in a hurry. It's not a marathon. It's a revision lecture. So please, even you have to solve it with me. Okay? So now, भाई साहब, in demand forecasting, understand this properly. In demand forecasting, what exactly are we doing, sir? How can we predict the demand? How is this even possible? Now, if you have studied OPM in a very good basis, you will get confused over here in 2 chapters. Because in simulation, also we do the same thing. In simulation, these are techniques of predicting the future. So nobody can predict the future, but you can have a prediction, you can have a forecast. एक अंदाज आप लगा सकते हो. Based on what, sir? Demand forecasting will be completely based on your past data. It will be based on past data. So there will be a data given to you. This is the data, and they will ask you, please predict the future. Please predict the future. Now, just to tell you one thing, in simulation, after this, I'm going to pick up simulation only, so you get an idea of, you get the flavors of both also. Okay? In simulation, also we do the same thing. But in simulation, we actually predict what is going to happen in the future. But that technique is different. It is Monte Carlo simulation. We use random numbers over there. If you have solved a simulation question, you might get an idea कि नहीं sir, हम उसमें क्या करते हैं? पहले हम लोग एक random number table से मदद लेते हैं, फिर 2-digit random number, and then we go ahead. So even that is a part of expecting or predicting the future. And even this is one thing. But in the examination, they will clear cut mention you whether you need to use regression or you need to use simulation. Now, talking about regression, this was the one thing. Second, we are going to use regression analysis for this. We are going to use regression analysis for this. Okay. Now, what exactly do you mean by this? To solve any demand forecasting question, please listen to me very carefully. To solve any demand forecasting question, 3 things must be there in your mind. और learn ही कर दो आप, बहुत simple.
सबसे पहले you need to understand the regression equation is this. I want everybody of you to write down this first equation in your book right now. Three things you need to write down. Three things. One is your equation and how to find the value of a and b. Okay, एकदम आराम से जाएंगे अपन. सबसे पहले I want everybody to write down in your book the regression equation, that is y is equal to a plus bx. Y is equal to a plus bx. सब लोग लिखेंगे प्लीज. अच्छा, और एक बात, in your entire demand forecasting question you need to find out the x value. Okay, so whatever they'll ask, anything they'll ask, okay, please predict the future of, let us say, 2 years from now, 3 years from now, anything, will solve the question. So that value is going to come in that x. Okay, this means what? We need to have a plus b values in front of you pehle se. Okay sir, okay, we got this. Y is equal to a plus bx. We need to solve this equation. We'll get the value whatever they've asked. Second point, sir, how to solve b and a value. Okay, I want everybody to update this in your book. I want everybody to update this in your book. Okay, now this is the formula. This is the formula for computing a and b. For computing a and b. So please, b you write down summation xy minus n into x bar y bar divided by summation x square minus n x bar square. It might look pretty difficult if you have not done, but this is very simple. They'll give you x and y values in the question. You need to sum. What is the meaning of summation? Summation is nothing but your addition. What is the number of n? N stands for number of observations. 1, 2, 3, 4, 5, anything. Okay. X bar is nothing but the mean value. So how do you compute mean? It's very simple. Mean is to be computed by what? Simple average. Mean is to be computed by what? Simple average. Just total it and divide by n. You'll get x bar and y bar. Summation x square, you need to put a column, and again n x bar square. Okay, this, from this you will get the value of b. Remember one thing I'm telling you again, this is the equation which we need to fulfill. Where the equation y is equal to a plus bx, and now what we are doing is we are seeing the value, how to compute the value of b. Because b आपको समझ में आया, then you will come down to a. Now see the formula of a, it is y bar minus bx bar. इसका ये मतलब है, first of all you need to have the value of what? B. You need to have the value of b. So whenever you are computing these type of questions, first compute the value of b and then substitute in the value of what? The a, and then you will get both a and b. The moment you get a and b, go and substitute in the main equation, and whatever they have asked, the x value, you can find out. Did you get this, everybody? Has everybody written this? Yes or no? Has everybody written this? Okay. Y is equal to a plus bx. Then we wrote two formulas, one of b and one of a. Please write down the formula very carefully. Wherever, now please listen to me very carefully. Okay, people get confused over here. Number one, whenever summation is written, whenever summation is mentioned, summation का मतलब होता है addition. So boss, wherever summation is there, you need to put up 1, 2 and 2. You need to put up what? The column for this. You need to put up what? Column for this. Are you understanding this? So whenever you are solving a problem of demand forecasting, you need to have summation xy column and summation x square column. Everybody done with this? Yes or no? Everybody done with this? Yes or no? First, have you written this, everyone? Three things must be there in your book: the regression equation line and one b value and a value. Yes or no? Everybody? Everybody? Sir, we have done this. We have done this. Okay. Now, these are the questions of your past model question paper and past. What we'll do right now is, first we'll go to your module. In module, there are pretty simple sums. We'll start off with that and then we'll go ahead. Okay. I want everybody to stay active in the comment section. Okay, please. Chalo. I've taken all the sums basically, so we'll do one by one. Okay. Chalo. The first on your screen. Okay. You can do it from your module also. Because ये warm up question है, ये warm up करेंगे. We'll see what they've asked. Okay. And just to tell you in a very crisp and brief manner, these are the same questions, similarly numbers changed here, and the same things is there in your what? In your past examination questions. Okay. Can we start with the first one, everybody? Chalo. Now, these are type of question which will come in your paper. For the following time series, data of project the sale for the next 3 years. I want everybody to pay attention over here. Project the sales for the next 3 years. भाई साहब अभी एक काम देखो, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया इन लोगों ने. सर, they have given information for what? 17, 18, 19, 20, 21 and 22. So this much information they have given you. Now they are telling you कि बाबा एक काम करो, अगले 3 साल का मतलब क्या होता है भाई साहब?
24, 25 and 26. 25 and 26. You need to predict the sales based on this data given to you. Can we do it? Yes. We can do it with the help of demand forecasting and with the help of what? Regression equation line. Okay. चलो. Now, sir, इसमें दो ही चीज दिए इन लोगों ने. इसमें इन्होंने year दिया है और इसमें इन्होंने sales दिए. ठीक है. The first thing what you need to do is start over here only. Your step one will be to compute the table. Now for that, y is equal to a plus bx. This must be there in your head, back of the mind. Also one more thing, this what I've mentioned over here, this thing must be there. Now pay attention everybody. Write this there in your what? Write this in your book pehle, because according to this you need to sort the columns, because if you don't understand this you will not be able to solve the columns on. Sir, okay, now sir, एक चीज कंफर्म है, हमको x चाहिए और y चाहिए. ठीक है. Now in the question this sales is there, no, this is basically your y. In few questions, listen to me very carefully, in few questions they will give you x and y both, but in this question they have given you year. You cannot assume that as what? X. So for x means what? It is basically time deviation. It is basically what? Time deviation. Now listen carefully everyone, what is the meaning of deviation? Deviation as in mean से आप कितना डाइवर्ट हो रहे हो, mean से आप कितना डाइवर्ट हो रहे हो. Now tell me one thing, how many years data given in front of you? Sir, 1 2 3 4 5 6 7 7. Can I ask you one thing, which is the middle year, which is the mean, it's the middle year? Sir, इस साइड में 3 साल है, इस साइड में 3 साल है, इसका ये मतलब है this is the middle year, that is the mean. Now you need to write down the figures, how much is there from the mean. I want divergence. So time deviation कितना होता है सर? अगर मैं यहां से यहां तक पकड़ू तो 17 और 20 कितना होता है सर? 3. So it is basically 1 2 and 3. From 18 to 20, so 2 years. From 19 to 20 it is 2. समझ में आ रहा है? So this is 3, this is 2 and this is 1. This is called as time deviation. So what we'll do is first of all this should be there at the back of your mind. सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले first we start with year normal. You have to write it down, everybody. I know it's there in your model, but please write it down. Second, time deviation. Now please pay attention. This is a very simple question because you can easily find out which is the middle. But in the next questions, there will not be any middle gap over here. For example, if there's an odd figure, but tell me one thing. अगर अब इसमें कितना दिया है? 3 4 5 6 7 7 फिगर्स है, इसलिए आपको इजी लग रहा है कि गाइस सर ये मिडिल है. अगर इसमें 6 ही साल होते, only 6 years would have been there, then you would have been साहब इसमें मिडिल कौन सा है? Because 3 इस बाजू में और 3 उस बाजू में, तो उस केस में क्या करना है अपन करेंगे, पर पहले ये सम करते हैं. दिस इज वेरी सिंपल सम. ओके चलो, ईयर 17 18 19 20 21 22 and 23. Okay, time deviation from where? Time deviation, this is basically your x from 2020. Okay, so start counting. 17 minus 20, how much? So this will be minus 3, minus 2, minus 1, this will be 0, and this will be 1 2 and 3. Everybody okay with this? If you do the summation x will be how much? So 0 only, no? It will be 0 only. Now you tell me, please, think for 2 minutes. What happens is students find this so simple, they start only checking the module. अरे कितना simple है. But trust me one thing, whenever columns का point आता है, then your mind needs to correlate with the formula कि यार कौन सा मुझे column बनाना है. If there's something ready-made in front of you, you find it very simple. It's बहुत simple है. But please try to do it. Now you tell me one thing, in this formula, what columns we need? Sir, summation पूछा है, मतलब summation x y column लगेगा. ठीक है? Now you have x over here, we write y also over here. Okay, we write y also. What is y? Y is ready-made. Y is given to you. What is y? 80 90 92, 80 90 92, 83 94, 99 and 92. Very simple. Now
First thing, we need x and y. We need x and y. We need the multiplication of x and y, and then we need to do the summation. So everybody, please start doing. Please start doing. सबको solve करना है भाई साहब. Minus 0, 94, 9 into 2, 198, and 92 into 3. 276. Can anybody please tell me what is the summation of xy? What is the summation of xy? Is it 56? Is it 56, everybody? Can you please tell me what is the summation of xy? Is it 56? Summation xy. सबका 56 आया क्या? Confirm करेंगे एक बार. This is summation x is 0. Summation xy is 56. Has everybody got summation xy is 56? Yes or no? Have you got summation xy as 56, everybody? Now if you have got summation xy is 56, again आप इसमें जाएंगे फॉर्मूला में और ये चेक करेंगे. Please go and check it कि whether or what columns we need. Sir, summation xy is done. N is just the number of observations. X bar is average. Y bar is average. Summation x square. हाँ, इसका अपने को column लगेगा. Summation x square. Summation x square. Okay, so what you will do now? What you will do? You go over here. You go over here. Right here. X square. So why you written x square? Because the formula they have asked summation x square करेंगे. तो अपने को उसका column total चाहिए उसका. तो x square का हम निकालेंगे. Also, the square is always positive. तो वो दिमाग में रखेंगे आप please. 9, 4, 1, 0, 1, 0, 1, 4, and 9. Can you please tell me what is the total of x square? Is it 28? Is it 28? Is it 28? Summation x square. Is it 28, everybody? Is it 28? सबको आया क्या चेक करेंगे एक बार. Is your summation x square 28, everyone? Simple एकदम. Okay, it's very simple. Is your summation x square? Is your summation x square 28? I want everybody to answer. I want everybody to answer. Only few students are answering. सबको आंसर करना है, ठीक है? Is your summation x square 28? Sir, yes, we have got summation x square. So basically, three things I have highlighted. Three things are the summation. Okay. Now please think, sir, और क्या चाहिए? What all we need to complete in the formula? See, this is all your raw material. अपने gather कर रहे हैं. The moment you gather all the information, your last step is only to put in the formula. आपको सिर्फ डालना है उस formula. खत्म हो गया. Okay. Now, sir, I think we are done with this. ये हो गया अपना. अब एक काम करेंगे. Okay. Now, x bar y bar. So दिख रहा है हमको x bar y bar. तो वो कैसे निकालते हैं? Please pay attention. X bar is basically your total of x divided by n. Sir, total of x is 0 divided by how much is n? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितने years है? 7. This तो ये कितना रहेगा सर? ये तो 0 रहेगा ना सर. तो आपको दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को. You need to show the examiner. Don't do it in your head only. हाँ sir, what simple x bar is what 0 only. Why to show? No, you have to show everything. It's not an MCQ paper. It's a descriptive paper. Okay. Y bar. Y बार कैसे करेंगे? Y का टोटल चाहिए. सर Y का टोटल निकाला नहीं हमने, तो आपको निकालना पड़ेगा. चलो 80 plus 90, 92, 83, 94, 99 and 92. Is it 630? Is summation Y total 630, everybody? 630, everybody. क्या सबको ये टोटल आ गया है? Summation Y 630. सर 630 total is there. Now what to do? आपको y bar निकालना है. कैसे निकालेंगे आप? 630 divided by 7. Y bar is nothing but simple average you have to do. Okay. 630 divided by 7. कितना आता है? Sir, this comes to 90. This comes to 90. Everybody, has everybody got this? Has everybody got this? Yes or no? So भाई साहब, now you have got summation y, you have got summation xy, you have got summation x square, you have got x bar y bar. Your life is all okay now. आपको सिर्फ क्या करना है? उस फॉर्मूला में डाल के b और a का वैल्यू निकालना है. Can we do it? Can you try? Can you please try? You already have b formula. Even I will do it. Even you will do it. Okay, and then we cross check the answers. Okay, so I want everybody now. Step number 2. This will be step number 2. Step number 2. What? Computation
computation of b, computation of b. So first of all, write down the formula again, कुछ नहीं होता है, summation x y minus n x bar y bar upon summation x square minus n x bar square minus n x bar square. Okay, now start putting the figures. Summation xy, it's all ready made. You have to only put the figures now. Summation xy कितना है sir? 56 minus n is how much? N is 7 into x bar is 0 and y bar is how much? 90. Whole divided by summation x square is how much? 28 minus n is how much? 7. X bar is how much? So this is 0 square. So that will become 0 only. Okay. So can you please give me what is the answer? Can you please give me what is the answer? Can you please give me what is the answer? Is your answer coming down to 2? क्या आपका answer 2 आ रहा है क्या? Is your answer coming to 2? Is your answer coming to 2? Have you got 2 as the answer? Have you got 2 as the answer? Give me a yes or no so that we can go ahead. Okay. Have you got the answer 2? क्या आपका B answer 2 है? If that is B is your 2, finish. If that is 2, go in your A wala formula and put it over there. Step number 3. Computation of A, like A value. Okay, sir, what is the formula? Formula is there in front of you only. A is equal to y bar minus bx bar. A is equal to y bar minus bx bar. Can you do it? Yes, sir. We already have b, we already have y bar also. How much is y bar? Sir, y bar we have computed as 90 minus b कितना निकाला भाई साहब? 2, and this is 0. X bar is 0 only, no? So can you please tell me what is the answer? What is the answer? Is A 90? Is A 90? Everybody, क्या आपका A 90 आया क्या? Are these two figures in your book right now? क्या आपके ये दो figures आपके book में है क्या? This A is equal to 90 and its B is equal to 2. Yes or no? Yes or no? Have you got A and B, 2 and 90? If this is done, boss, your 90% sum is over. Now you only need to put what? The main. अभी जो पूछा है वो निकालेंगे आगे. Okay, everybody, has everybody got the answer? Yes or no? क्या सबका आंसर आ गया? First you need to come to the value of B and then you need to come to the value of A. It's very simple. And trust me one thing. Two types of questions comes over here. This is the first type of question where it is all very similar. Similar as in what? 3 साल इस बाजू में, 3 साल इस बाजू में. Odd numbers है. Because very easy for you to compute the deviation from between. But we'll do one more question where there will be even number. For example, if they give you 6, then you might be in a confusion. तो वो एक टाइप करेंगे आप, ठीक है? पर सबसे पहले ये आपका आंसर आया है. अगर ये आंसर आया है भाई साहब, तो अभी अपन क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन क्या पूछा इन लोगों ने कि एक काम करेंगे. Now, if you've got the entire data in front of you, you need to do for what? The next 3 years. 3 years का मतलब क्या है? 24, 25 and 26. Okay, sir, we'll do it. Now, step number 4. Step number 4. The first one, this is basically forecasting now. Now we are forecasting for the sales units, okay? 2024. First year का निकालेंगे अपन. Sir, this was the equation. Y is equal to A plus BX. जो original equation था, okay? Now you please tell me one thing. How much was A? Sir, A was 90. A was 90. Plus B is how much? Sir, B is 2. Now you tell me how much will be X? How much will be X? Arey Baba, tell me one thing. 24 you need to compute, na? 24 you need to compute. This is what you need to compute. One second. This is what you need to compute. This 24. Now from the middle. Sir, this is the middle, right? This is the middle. How many years are there? Sir, 1, 2, 3 and what? 4. So in X you will go there and you write here 4. Did you understand? From middle you need to count how many years it is. So 1, 2, 3 and 4. So can you tell me what is the answer? 2 into 4 ये कितना आता है? और ये 90. Is it 98 everybody? Is it 98 everybody?
क्या आपका आंसर 90 रहा है क्या आपका आंसर 90 रहा है? बेसिकली दिस इज 98,000 यूनिट्स. In the question it was mentioned, where is the question? It is sales in what? Sales in what? Thousands. Sales in what? Thousands. Okay. So अभी वही करेंगे यहाँ पे 0 units. Can you please compute the values for the next 2 years, 25 and 26? I'll be waiting for your answer. I'll be waiting for your answer. तो आपको अभी 2 साल का निकालना है, 25 का भी निकालना है और 26 का भी. I think you will be able to do it very properly. 2025. Y is equal to a plus bx. Y is equal to a plus bx. Sir, a and b value is not going to change. वो तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ x value is going to change. I want you to give me the answer for 25 and 26 also. 25 and 26. 90 plus 2. This will be 5. How much? 100. 000 units. And 2026. 2026. Same. 90 plus 2 into 6. You understood now from where 4, 5, 6 are coming? We are counting from the middle. Okay. 2 into 6 plus 90. How much is this? 102 units. Okay. Have you got this answer? 98,000, 100 and 102. Everybody yes or no? Everybody yes or no? Have you got these answers? Have you got these answers? Can you please confirm? Yes, is everybody comfortable with this? Is everybody comfortable with this? And I'm telling you, trust me on this. Sure, short question is there. Sure, short question in your December 25 examinations. Okay. ये simulation भी पूछेंगे और CPM पर भी पूछेंगे. Okay. So please. Yesterday, by the way, we completed linear programming problem. One of the most important, and in the past, they only asked one. एक बार ही पूछा था. So इस बार chances बहुत ज़्यादा है LPP पूछने का. Linear programming problem. Okay. अपन ने last 2 questions भी किए थे simplex के ऊपर, तो वो भी revise किए थे अपन ने कल. Okay. Then we did assignment, transportation. All the 3 chapters were important in yesterday's lecture. Okay. Especially assignment. Okay. Has everybody done? Okay. Everybody comfortable with this? Okay, sir. So this is one pattern. ये एक pattern हो गया. ठीक है? चलो. Can we go on to the next pattern, please? Next pattern करेंगे अपन. Everybody. चलो. Now. चलो. Now we'll go on to next question. Next question. Okay. Pay attention, please. आपके मॉडल क्या है? पहले मॉडल की क्वेश्चन खत्म करेंगे. And then we go on to the model question paper because you will find similarity over there. बोले यार सर ये तो अभी सॉल्व किया अपन ने. That is why पहले ये चेक कर रहे हैं अपन. ठीक है? 7 marks questions are these. Next question on your screen. It's a different question. With the help of the following data, project the trend of sales for the next 5 years. कोई बात नहीं. अभी 3 साल का पूछा था, अभी 5 साल का पूछे. No problem at all. Okay? But this is a very, very, very important question. So why important? अभी तो किया है अपन ने. क्या only formula? No, no. You understand one thing over here. See the data. 18, 19, 20, 21, 22 and 23. Sir, okay, no problem. You cannot find the mean over here. Why? So 3 years or 3 years. Where is the mean? So how will you compute the deviation? इसमें से यही एक ही the biggest problem is this. If you understand that, the entire question is very simple. Okay. So I'll give you a shortcut trick which is very simple. What you need to do is you need to assume 6 months over here. Pay attention everybody. 2 minute pen नीचे रखेंगे. 2 minutes. Pay attention. If you understood the first question, very good. This is the second question. This is the second type. Second type में you won't find the mean because the numbers are got even over here. 6 साल है. अभी तो आपको एक काम करना पड़ेगा. Pay attention. Can I say one thing? The mean is somewhere between this and this. Can I say something like this? The mean is between 2020 का mid का year and 21 का start. अब उसके बीच में मतलब 2020 के mid. तो एक काम करेंगे. We'll assume 6 months as 1 unit. 6 महीना मतलब एक काउंट करेंगे अपन. तो भाई साहब आप मुझे बताएंगे. You will tell me when I'm putting the first column. First column will be my what? X. अपन solve करेंगे. Deviation निकालते time deviation from the mean from the between. You tell me how much will I write in the first one? Sir, if you're telling 6 months is 1 unit, इसका ये मतलब होता है सर 2018 का हम 2 यूनिट गिनेंगे. Pay attention है everybody. 2018 का हम 2 यूनिट गिनेंगे सर. ओके बराबर. 2019 का भी 2 गिनेंगे.
2020 का मिड बोल रहे हो बराबर, तो 2020 आई कैनॉट टेक इट एज फुल 2 बिकॉज 2020 इज डिवाइडेड राइट, वो मिड है ना उसमें, तो मैं उसमें एक ही गिनूंगा, ओनली वन. So the first answer will be from year to year. How much it will be? Five. Five. समझ में आ रहा क्या? Has everybody understood this five का logic? Tell me that. Then I will go ahead. Has everybody understood five का logic? मैंने एक साल का दो टुकड़े किए, 6 महीना किए. I've taken it 6 months. So इसका दो हो गया, इसका दो हो गया. 2020 का दो पकड़ नहीं सकता भाई साहब, बिकॉज उसके ही बीच में से आपने को काउंट करना है. तो उसका मैंने एक ही यूनिट पकड़ा, एक. So 2, 2 and 1. Have you understood this? Please tell me. This is the mid over here. Have you understood this? Please tell me. कि पहला पार्ट कैसा है? If you have understood this, the entire question is very simple. This you will only use it when there are even numbers. Even. Everybody, have you understood this? Give me a yes or no so that we can go ahead. Everybody. चला शुरू करूया अपन सॉल्व करायला हे. Can we start solving this? First, we'll make a table. I want you to do this completely. Yeah, full करने का आपको full पूरा. Everybody, pay attention. Everybody, I want everybody to comment. Come on, चलो. First, we need to compute the values of A and B. First, we need to compute the values of A and B. Same करेंगे. सबसे पहले, sir, year. Next will be time deviation. Time deviation from mid. What is that mid? 20. Mid 2020. Okay, assuming 6 months as 1 unit. You can write it now. 6 months is equal to 1 unit. 1 unit. Okay, next this will be your x, by the way. ये आपका x है. This is your x. Y. Next we want xy and we want x square. Same routine will be. Same routine. Okay, here from 18 to 23. From 18 to 23. 18, 19, 20, 21, 22 and 23. Everybody okay with this? Everybody okay with this? चला शुरू करूँ आता. Now you tell me one thing. Yes, first मैंने आपको explain किया already. I've already explained you this. What? Yeah, how to count? How to count? एक बार वापस. The ones who have not understood, again watch the screen again. From 18 I need to go till the mid. From 18 I need to go till the mid. How will I go? If this would have been a very normal question, if there would have been a mid in between, अगर odd numbers होते तो my life would be very easier. Just count directly. But this is even. So I have made it more easier. How? I have taken this as 6 months. So what I do? Sir, इसके दो हो गए. From 18 to 19 to 20 का मैं एक ही पकड़ूंगा because वो mid है. मैं पूरा साल नहीं पकड़ सकता उसका. ठीक है? कितना हो गया भाई साहब? This will be -5. This if that is done, बाकी बहुत easy हो जाता है. -4, -3, -2. समझ में आ रहा है आपको ये? Are you getting this, everybody? कौन से? इसका कितना होता है 2019 का? ये 2 और ये 1, तो 3 होता है. -3. ये -3 हो गया है. 2020 का -1, बस उसमें एक ही यूनिट है ना. 21, this will be +1, 22. So 2, 2 and 1. This is 2. 21 का कुठे गेलं 1 लिखा मैंने 21 का. 22 will be 3 and 23 will be 5. 23 will be 5 from counting from here. See, from 23 also I count. This will be 2. This is 1, 2, 2 and 1. Okay, उन दोनों का बीच mid I am taking. This is mid. I cannot take 21 as full because also 20 and 21 in between it is. So have you understood this? 5, 3, 1, 1, 3, 5. Everybody, have you understood 5, 3, 1, 1, 3, 5? Everyone, yes or no? This will be summation x will be 0. Summation x will be 0. Why? They've already given you why. What's simple? 100, 110, 115, 115, 120, 135 and 140. Do I need summation y? Yes, we need summation y because we need to compute y bar. Can you please complete the total? Summation y is equal to 720. So 720. Everybody, summation xy. Have you just multiply? Do it fast.
this will be minus 500. 110 into 3, this will be minus 330. This will be minus 115. This will be plus 120. 135 into 3, this will be plus 405, and 140 into 5 is 700. Summation xy total is your total 280. Everybody. Next, summation x square. Always positive. Square is always positive. 25, 9, 1, 1, 9 and 25. Summation x square. कितना देख चेक करेंगे एक बार. 25 plus 9 plus 1 plus 1 plus 9 plus 25. How much is this? 70. Have you got all of these figures? ईशान आपका आंसर राइट है. This and this. Everybody okay till here? 720, 280 and 70. Okay, now if you have got this, don't wait for me now. You can solve it. आप खुद solve कर सकते हैं. Don't wait for me. If this is done, now you need to do the formula. आपको formula करना है. आपको value of b. Step number 2. Computation of b. Okay, so what is b formula? Summation xy minus n x bar y bar upon summation x square minus n x bar square. Okay, summation xy, you've already got it. This is 280 minus how much is the n? Sir, 1 2 3 4 5 6. और एक बात सुनो, only for computing the deviation we have used that logic. 6 months of 1 unit. 6 months equal to 1 unit. But when you are writing n आप normal गिनेंगे. Normal कितना n? 6. Don't count 2 2 2 2 again over there. x bar, अच्छा x bar y bar निकालना है अपने को. I'll just do it over here. x bar कैसे निकालेंगे? Total of x divided by 0. This is going to be 0 only. And y bar कैसे निकालेंगे आप? So 720 divided by 6 कितना आता है? 720 divided by 6. So this comes to 120. ये आपका y bar हो गया. ठीक है, चलो 6 into 0 into 120 whole divided by summation x square कितना आता है भाई साहब? 70 minus 6 into 0. Can you please tell me what is the answer? Is your answer 4? (22) से स्वस्ति का मैसेज क्या है? 22 से क्या बोला उसने? See this, स्वस्तिका 22 से अपने को मिड. सी ना, इन दोनों के बीच में मिड है. Listen to me very carefully. 20 also you cannot take full. 21 also you cannot take full because it is there in between. So whenever I'm counting 21, I cannot count 21 full. उसके बीच में ना वो. So basically this will be 2 और इसका 1 वो बीच का 6 महीने का एक ही. That is why it has become 3. From where? Year. जब मैं यहां से यहां तक काउंट कर रहा था तो कितना काउंट किया मैंने? सर 2 और इसका 1 काउंट किया. सेम अगर मैं 2022 से जा रहा हूं तो मैं इसका 2 और इसका 1 ही गिनूंगा बिकॉज ये इसके बीच में आ रहा है. इट इज फॉर्म इन बिटवीन. So it is becoming 3. Do you understand that? Is your answer 4? Is your answer 4 over here? Have you got 4 everybody? Yes or no? Have you got 4? अच्छा, चलो step number 3. Computation of a. कैसे निकालेंगे आप? What is the a formula?
So ये formula we have already written over there, y bar minus b x bar, y bar minus b x bar. How much is y bar? Sir 120. b is how much? 4. x bar is 0. ये कितना आएगा भाई साहब? 120 is your answer. 120. 4 and 120 is your answer. 4 and 120. 4 and 120 is your answer. Is your answer 4 and 120? 4 and 120. If you've got the values of A and B, next what you're going to do is you're going to do for the next 5 साल 5 years का निकालना है आपको, and this is going to be tricky because you have to count from between. Okay, so can we start? Can we start? Step 4. This will be forecasting the sales. Forecasting the sales. So इसका ध्यान देंगे please यहाँ पे. Forecasting the sales. What is my equation? Y is equal to a plus bx. You already have a, you already have b. You have to compute the value of x. x कैसे निकालेंगे अभी अपन? तो सबसे पहले काम करते हैं. They have asked what? There is a question. There is a question. This is the question, right? हाँ. 20 next 5 years. So 24, 25, 26, 27, and 28. So first we'll do it for 24. First we'll do it for 24. So 2024. Y is equal to a plus bx. Y is equal to a is how much? 120 plus b is how much? 4. Now you tell me how much will be x from between. How much will be x from between? How much will be x from between? Now pay attention please everybody. This is 24 over here. Now please count from here. कैसे काउंट करेंगे अभी अपन? सर इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, 24 हो गया 4. इसको अपने को भी एक काउंट करना है. सो 24 2 and this will be how much? 1. 2 and 1. So 2 plus 2 plus 2 and plus इसका सिर्फ अपन कितना पकड़ रहे हैं? एक ही पकड़ रहे हैं उसका, बिकॉज 6 महीने का एक यूनिट है. तो दिस विल बिकम हाउ मच? 2 plus 2 plus 2 6 6 plus 1 7. आपका इसमें कितना आएगा? 7 आएगा. दिस विल बिकम हाउ मच? 7. How much will be the answer? 4 into 7 plus 120. This will become 148. This will become 148. Everybody got 148. Has everybody got 148? Has everybody got 148? Now, please do it for 2025. Please do it for 2025. Okay? सीधी सी बात है और 2 उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है? So this will become how much? Y is equal to a plus bx. Y is equal to 120 plus 4 into 9. कितना आएगा इसका आंसर? 4 into 9 plus 120. This will become 156. This is by the way rupees. अपन sales forecast करते हैं. This is rupees 156. Next 2026. दो साल आपको ऐड करना है सिर्फ बस, ठीक है? Because 6 months is equal to 1 unit. Y is equal to a plus bx. 120 plus 4 11. कितना आता है इसका आंसर? 4 into 11. 4 into 11 plus 120. Rupees 164. 2027. Y is equal to 120 plus 4 13. Answer 4 into 13 plus 120. This will be rupees 172. 1 2 3 4 और एक साल चाहिए. 2028. Y is equal to 120 plus 4 into 15. Answer 4 into 15 plus 120, and this will be rupees 180. This will be rupees 180. So in your book these answers must be there. 148, 156, 164, 172 and 180. All these answers must be there in your book. Confirm करेंगे एक बार आपके ये आंसर आगे है क्या नहीं है. Please confirm this whether is the answer there in your book or not. 148, 156, 164, 170 and 180. क्रॉस चेक करेंगे मॉडल के साथ. So these are your model answers which are same. 148, 156, 164, 172 and 180. 180. Everybody okay till here? Everybody okay till here?
स्वस्तिका आपको समझ में आई है एवरीथिंग? हैव यू गॉट दिस एवरीबॉडी? ठीक है. नाउ I don't think there's a confusion now. We have done both the point. So we can do one thing now. We can do one thing. I'll just go on your model question papers now. ठीक है? जो questions अपन ने already ये मेरे PDF में object show. We did not start. Now we'll start now. Okay? And we'll see whether you can do it or not. Okay? Can we start with the first question? Everybody okay? Clear? Can we start with model question paper? Yes or no? ठीक है. This is model question paper December 24. अभी जो आपका December 24 का model question paper है उसका ये question है. उन लोगों ने ये डाला है demand forecasting. Okay? चलो everyone pay attention. An investigation into the use of cars in 5 towns has resulted in the following data. Population in town, they've given you. Now see, pay attention. यहाँ पे उन्होंने clear cut mention किया है कि this is X. And number of cars also they have given you, this is Y. So you tell me one thing, whether you will do time deviation this or no, they have given you X over here. Illustrate a linear regression of Y on X and estimate the number of scooters to be found in a town with a population of 29 lakhs. Ladies and gentlemen, understand one thing. ये entire this question is completely spoon feeding. Why? They've given you everything. X and Y they've given you, and this 29 lakhs is there. No, this is basically your X, which will put it in Y plus A plus B by X. जब हम लास्ट में निकालेंगे ना, Y is equal to A plus BX. ये जो X है ना, ये X already आपको दिया है यहाँ पे 29 lakhs. In the questions what we did right now, they told us कि estimate 3 years, estimate 5 years. ये कर रहे थे, इसमें ऐसा नहीं है. तो कैन यू प्लीज डू इट? आई विल नॉट शो द आंसर. आपको खुद ये करना है. देन वी क्रॉस चेक द आंसर विद द मॉड्यूल. एवरीबॉडी ओके विद दिस? एवरीबॉडी ओके विद दिस? चलो, कैन वी स्टार्ट? सर, first what we'll do is we'll prepare our table. First we'll prepare our table. Okay, chalo, this is the question which is there in your on your screen. Chalo, X is given, Y is given. I need X Y column and I need X square column. These are column which I need. How much is X? 5 7 9 14 15. 5 7 9 14 and 15. और Y कितना दिया है? 9500, 7600, 8700, 10,000 and 12,300. Okay, now can you please tell me, do I need the total of X and Y? हाँ sir, लगेगा ना, because when we will compute the X bar and Y bar, we will have to know the addition of X and Y. So please start doing the addition from first only. Okay, summation X, how much is it? 5 plus 7 plus 9 plus 14 plus 15. कितना आता है ये? Sir, this is 50. Now summation Y, कितना आता है summation Y everybody? 9,500 plus 7,600 plus 8,700, 10,000 and 12,300. How much is this? 4,81,000. 4,81,000. Sorry, my bad. 48,100. Summation XY into 5. 47,500. 7,600 into 7. 53,200. 8,700 into 9. How much is this? 78,300. 10,000 into 14. This is 1,40,000. Next, 15 into 12,300. This is 1,84,500. Okay, total summation XY is equal to 47,500, 53,200, 78,300, 1,40,000 and 1,84,500. So 5,03,500 should be your total. Okay, X square. Now we want X square. 25, 49, 81. 14 into 14 is 196 and 15 into 15 is 225. 25 plus 49 plus 81, 196, 225. 576. 576. Okay,
इज दिस टोटल्स इन योर बुक? ये सब टोटल आपके बुक में है क्या? यस और नो. आर दिस टोटल्स इन योर बुक? यस और नो. Are these totals in your book? Everybody? Now, if these totals are there in your book, now two things you need to do before we go ahead. I need X bar and Y bar. How will we do it? X bar is equal to your summation X upon N 50 divided by कितना है वो? 1 2 3 4 5 5. So this will be 10. Y bar summation Y upon N 48,100 divided by 5 कितना आता है? 48,100 divided by 5, 9620. Okay, so these are your two figures of X bar and Y bar. Is this done, everybody? Is this done, everybody? Have you got these figures in your book? Give me a yes or no, so that we can go ahead. Now, if these figures are there in your book, now one thing what we can do is we can compute the value of A and B the same fashion what we are doing it. Okay, so can we start doing? Step number 2. Step number 2. Computation of B. Okay, so B is equal to summation xy minus n x bar y bar upon summation y square minus summation x square minus n x bar square. Okay, now how much is summation xy? Sir, it is 5,03,500 minus n कितना है? Sir, एक 5 था into how much is x bar? 10. How much is y bar? 9620 whole divided by summation x square 576 minus 5 into x square is how much? X bar square. Sir, 10 का square. ठीक है? Can anybody please give me the answer for B? Can anybody please give me the answer for B? $22,500 divided by 76. क्या आपका आंसर 22,500 divided by 76 is your answer 296 approx? Is your answer 296 approx? We'll cross check. अपन cross check करेंगे मॉडल के साथ. पर पहले can you please tell me is your answer 296? Is your answer 296? Is your answer 296? Everybody, have you got 296 in your book? Everyone, give me a yes or no, please. Give me a yes or no. स्वस्तिका, आप आपका आंसर क्रॉस चेक करेंगे एक बार. शायद से you might have done a mistake. I'll keep the screen as it is. Please आप चेक करेंगे. मैंने सॉल्व किया है पूरा. You can check whether you have gone wrong, whether you have gone right. Right answers are 296. I want everybody to please comment 296. Okay, if you have got the answer, don't just write 296. If you've got the answer, then only please tell me 296. पशा घाई करो नकोस. ठीक है? Calculation 1 here and there, everything will go wrong, and we are not in a hurry. I'm telling you, it is not a marathon. आराम से करो. There is no hurry at all. Okay, do it very properly. I want everybody to answer. If you have got 296, and if you have got 296, please proceed with the calculation of A. आपको A भी निकालना है. You have also compute A. If this is done, the step 3 will be computation of A. Now how will we compute A? You already know the formula. Everybody, Radhika, आपका आंसर राइट है. वेरी गुड. Y bar minus BX bar. Y bar minus BX bar. Okay, चलो. Sir, Y bar आपके पास है? सर है. We already have Y bar over here. How much is this? 9620. 9620 minus B is how much? You already computed B. 296 into X bar is how much?
You already have X bar, right? It is 10. It is 10. Can you please give me what is the answer for this? 2960. Is it 6660? Is it 6660? Is your answer 6660 for A? Is your answer 6660 for A? Everybody, क्या आपका आंसर 6660 है? Everyone, प्रतीक्षा आपका आंसर राइट है, पशा आपका आंसर राइट है. वेरी गुड एवरीवन. Rest of the public, can you please give me an answer कि whether your answer is 296 or 6660? 296 and 6660. Okay, we have not checked the answer of model. We'll check it afterwards. I hope it is right. Okay, because we are following a simple pattern. There is one more way of solving this question. तो वो शायद से solve करेंगे उन लोगों ने. But we are sticking to the same formula which we are using with every sum. Okay. चलो. Now, if this is the answer, so last अपना part बाकी है. Step number 4. What is step number 4? Please tell me. It will be forecasting. Okay. It will be estimation. So y is equal to a plus bx. Now, boys and girls, x is already given. Huh? They have already given in the question. What it is? How much? Please find out the number of scooters or number of cars found in a town with a population of what? 29 lakhs. So 29 is your what? X. ये काम करेंगे. A is 6660 plus B is 296. 26 into 29. Can you please tell me what is the answer? 6 into 29. Chalo, we cross check. I hope we have got it right. 296, 29 is your answer, or 26 into 29 plus 6660. Is your answer 15,244? Is your answer 15,000? Is your answer 15,244? Give me a yes or no if you have got this answer. Give me a yes or no if you have got this answer. If you have got 15,244, क्या आपका आंसर 15,244 आया क्या? That's the final answer. 15,244. Have you got this answer? 15,244. How many of you have got 15,244? And if you have got this answer, I'll tell you one thing. This is your model, model question paper, and this is your A. This is your A, which was right, 6660. आपका B था 296, कैपिटल B, ये B 296 है. आपका फाइनल आंसर है 15,244, which is exactly matching with your answer. Okay, 15,244. Has everybody got 15,244? And that's your answer, basically. Okay, so this was your model question paper December 24, and I think it's pretty simple. 7 marks. It is a bonus. ये bonus है. 3 things you need to know. 3 things. Y is equal to A plus BX. B का formula और A का formula. Finish. If you know this, you are good to go. You are good to go. Okay, चलो. Next also we'll do one more question, then I'll switch to next chapter. Okay, चलो. मतलब एक आपको practice हो जाएगा, ठीक है? We are going to solve everything. See, I have all the answers ready made right from day one. FM के लिए भी सब solve किए हमने, और इसके लिए भी वही कर रहे हैं. We are doing the same thing, just solving. Okay, I am not showing you the answer. We cross check the answer in the end. Okay, so this is December 23 set 1. अभी मेरे हिसाब से tell me one thing. It is for 7 marks. Can I say one thing? You only just अभी solve किया अपन ने ये question. और वापस solve करेंगे. स्वस्तिका आपको ये solve करना है. You need to solve. ये same है क्या रे? Is this same? Okay, numbers have changed, but this last question will do. But you need to solve it. Okay. Swastika, you need to solve this. Start to end. Pura. Start to end. I'm telling you. So everybody ready? Can we start? December 23. Set 1. With the help of following data, project the trend of sales for the next 5 years. Okay, same question what you've done. Figures have changed. Okay, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh my god, this is a what? So these are even numbers. इसका मतलब क्या है कि सर इसके बीच में है. This is the mean. This ये अपना बीच में, ठीक है? This is what? The mean. Now, same thing. Assuming 6 months as one unit. Assuming 6 months as one unit. Okay. Can you start doing this question on your own? Okay,
Also, one more thing, x is not given. We need to write down x. That will be time deviation from the mean. And also one more thing, this is y. ये आपका y दिया है. क्या आप शुरू कर सकते हैं? Even I will solve, you will solve. Simple. Okay. Start. Step one will be your table. Basically, this will be year. This will be year. This will be time deviation. This will be time deviation between 19 and 20. 19 and 20. Okay. 6 months is equal to 1 unit. Okay. ये हो गया आपका x. This is your x. This will be y. This will be xy. And this will be x square. Keep it very simple. Okay. These columns must be there. Year कौन से भाई साहब? 17 से लेके 22 तक है. Okay. 17, 18, 19, 20, 21 and 22. Simple. चलो. Now can we start? क्या हो counting? Same thing will count. Same thing. Numbers same ही आएंगे भाई साहब. Numbers will come same. Okay. So 17 से लेके mid तक काउंट करना है. कितना होगा सर? It will be 2 and I cannot count 19 as the whole because it's there in between only. Okay, so I'll count this out. 1 अपन एक ही काउंट करेंगे उसको. तो ये कितना होगा? -5. 18 से कितना होगा भाई साहब? 18 से कितना होगा? So this will be 2 and only 1. Only 1 will come over here. This will be 2 and इसका एक ही पकड़ेंगे ना अपन. थोड़ी 19 को पूरा पकड़ना है. 19 के बीच में जाने का अपने को. Okay. So this will be -3. 19 से लेके सर 90 में तो एक ही आएगा ना. Only 6 months we are counting. No. This will be how much? This will be -1. समझ में आ रहा है? 20 से this will be 1, this will be 3 and this will be 5. As simple as that. Everybody okay with this? Everybody okay with this? चलो. Summation x will be 0. This will be 0. Okay. Why? Why they have already given you? Why they have already given you? 120. चलो, come on. 120, 130, 135, 140. इसके बाद क्या है? 150 and 165. Do we need to have the total of y? Yes. Yes. निकालना पड़ेगा. y बार के लिए लगेगा आपने. 120 plus 130, 135, 140, 150 and 165. 840. Summation y is equal to 840. Okay. xy. अभी xy निकालना है अपने को. प्लीज साइंस अब मैच करेंगे. माइनस भी है उसमें, तो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ डूइंग कैलकुलेशन मिस्टेक. 120 into 5 -600, 3 into 130 -390 -135. This will be positive 140. 150 into 3, this will be positive 450. 165 into 5, this will be positive 825. Summation xy is equal to how much? Is it 290 everybody? Is it 290? I hope you're on the right track. Okay. X square 25, 9, 1, 1, 9, 25. Total please everyone. Total summation x square is equal to 25 plus 9 plus 1 plus 1 plus 9 plus 25. How much is this? Is it 70? Now, are these figures in your book? Yes or no? Are these figures in your book? This is 0, 840, 290 and 70. Are these figures in your book? Give me a yes or no. If it is there, then we can go ahead. If this is there, then we can go ahead. Everybody, are these figures in your book? 840, 290 and 70. Okay. If this is there, next we can do is step number 2. Step number 2, which is to compute the value of b. Which is to compute the value of b. Okay. So you already know the formula. Please start doing this. Minus n x bar y bar upon summation x square minus n
x bar square. Okay, everybody. Summation xy. How much is it? 290 minus n. I've told you when these are in a time deviation, please don't count 6 months over here. Count normal only. Count normal. How much is this? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 0, and y bar is how much? अच्छा, y bar निकालना नहीं आपको. X bar will be 0 only. Summation x upon n, this will be 0, and y bar will be summation y upon n. This will be 840 upon 6. और ये कितना आता है? 840 divided by 6. This comes to 140. This comes to 140. Okay. Now this will be 140. Makes no sense because it is 0 already. Summation x square 70 minus 6, and x square is how much? 70. I hope you have done with this. Can you please give an answer? कितना आंसर आता है? 70 into 6. One second, ये ऊपर क्यों गए पेजेस में? How much is the answer for B? Everyone. B का आंसर कितना है आपका? Where's the question? Where's the question? Here. All right. X bar is 0, no? So 290 divided by 70. So your answer has to be 4.143 approx. Is your answer 4.143 approx? Is your answer 4.143 approx? Everybody, did you get 4.143? Everyone? Okay. If you have got this, your step number 3 will be compute the value of A. Compute the value of A. कैसे निकालेंगे? A is equal to, you have already got the formula, y minus b x bar. Y minus b x bar. How much is y? y bar minus b x bar. Y bar is how much? निकाला आपने y bar 140. 140 minus b 4.143 और ये 0 है. तो आपका आंसर 140 आना चाहिए. Is your answer 140 of A? Is your answer 140 of A? Everyone, 140 आया आपका आंसर ये. Is your answer 140? Everyone, is your answer 140? So 4.143 and A is 140. Now you will start estimating the sales figures. Okay. So we need to do it for how many years? कितना साल पूछा इन लोगों ने यहाँ पे? They have asked for 5 years. Okay. So 23, 24, 25, 26 and 27. Okay. 27 तक आपको निकालना है. Forecasting. Step number 4. Sales estimation. So by 2020, 2023, how much is A? 140. 4.143. अब ये x कितना लेंगे? वही same numbers gonna come. Okay. Now please tell me how much you will take your this x बीच में से. How much will this is 2023. This is 2023. How much is it from here? So this will be 1. इसमें एक ही पकड़ेंगे ना अपन. 2, 2 and 2. 2 and 2. So how much will be 2 plus 2 plus 1, 6, 7.
This will be 7. 170.891. 2024. 140 plus 4.143. You just add 2 to it. 9. ये कितना आएगा? 4.143 into 9 plus 140. 179.717. Y 2025. 140 plus 4.143. 11. कितना आता है? 4.143 into 11 plus 140. 188.543. Next. Y ये 25 था. 2026. 140 plus 4.143. 13. Answer 197.369. 1 2 3 4 और एक साल बाकी है. Y 2027. 140 plus 4.143. 15. 4.143. 4.143 into 15 plus 140. Your answer has to be 202.145. I hope you have got these answers, everyone. Has everybody got these answers in your book? सबका आंसर आ गया क्या? 170, 179, 188, 197 and 202.145. Have you got these answers? Yes or no? Have you got these answers? Yes or no? Cross check करेंगे एक बार. So these are the answers what we have got and what they have got. It is all same. ये आपको सब सेम आंसर मिलेंगे, ठीक है? 169 वही निकाला ना अपन ने. हाँ, same, more or same or less. Okay, चलो. Everybody okay with this? Okay, now you can solve the rest on your own. देखो, now has everybody done? Can I go on to next question, please? Are you comfortable with this now? Are you comfortable with this? 7 marks is it? Please listen to me very carefully. 7 marks है. I'm telling you, in this entire week, we are going to wrap up OPM SM. SM, you don't worry, Sunday को wrap up कर देंगे पूरा. If you have tension for SM, just sit on Sunday. And OPM, even if you do these chapters which I'm taking right now, you will score more than half of them. Exemption is guaranteed, okay, because these questions are going to come. And according to new pattern, 7 marks will be one question. It will not be for 2, 2, 3 marks. Has everybody done this? Give me a yes or no so that I can go ahead. Everybody. December 23 set to we are going to solve. This will be your homework. ये homework है, मतलब आप आराम से कर सकते हैं. 7 marks it is. It is a 7 marks question. The point is already x और y दिया है. Same question, same. So see, there are 3 patterns. One pattern is where they give you odd numbers, which is very simple. आपको बीच का निकालना पड़ता है. उसके बाद जब even देते हैं आपको, तो आपको वो टाइम 6 months is equal to 1 unit. And ये थर्ड पैटर्न है जहां पे x और y ऑलरेडी दिया उन लोगों ने, आपको कुछ करना नहीं है इसमें. X and y already given, and this is also given. This is your x, where you will put it in your regression line. Y is equal to a plus bx. और जो x है वो यहाँ पे 16 लाख दिए ऑलरेडी. आराम से आप कर सकते हैं. I don't think there is any difficulty in solving this. Okay, so we can do this afterwards also. चलो, can we go on to the next chapter now, please? There are a few questions in my PDF. और बाद में check कर सकते हैं, ठीक है? और it's same only. It's not different. चलो, now everybody, please pay attention. Please pay attention. We are going to start with what? Simulation. I want everybody to pay attention over here. We have done this in our classes. Simulation, it is very, 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 very important. Okay, and it's very easy also. It's not difficult nahi. Okay. Chalo. Give me 2 minutes. I just have a sip of water. Okay. Now,
I want everybody to pay pin drop attention. Full, huh? Full. Now, simulation is a technique. Pay attention. Yesterday we did something called as assignment. When we were doing assignment, there was one method which was there, and that was Hungarian method. Simulation is to be solved by Monte Carlo simulation. Okay, there's a specific method to solve. Sir, leave out everything. Please tell us what is the meaning of this simulation. मतलब क्या होता क्या है? Now it is same like a demand forecasting, but demand forecasting we use something called as regression line. But in this we use simulation. See, simulation is a technique. It's a prediction technique. Okay, I am forecasting. एक अंदाजा लगा रहा हूँ मैं. But it is based on random numbers. It is not based on regression line. It is based on random numbers. In the examination, they'll give you random numbers and from that you need to simulate the pattern for the next trend. Demand, for example. Okay. Now pay attention. There is a way of solving simulation. और वो easy है. Step marks में मिलेंगे आपको. 7 marks in. And trust me one thing. If I show you the past examination question, या model question paper, in every examination, in every model question paper, you will find simulation. Okay. So, and there is a particular question which is coming again and again and again. Okay. So now just to start off with a few warm up. Pay attention please everybody. बहुत easy है, interesting भी है. In simulation, the first step will always be 2-digit random number table. In that we make columns, we make cumulative, अपन probability को add करते हैं, cumulative करते हैं, and then we prepare the last column called as 2-digit random number. Second will be your simulation table. Second will be your simulation table which will be customized. Now see, this first step might be very standard. So sim probability add करना है, cumulative और last में वो 2-digit random number table बनाना है. But this second step is completely dependent on the question, what they are asking, what they want from you. Okay, chalo. Can we start the first thing? Can we start the first thing? I want everybody to pay attention, please. Everybody. Chala. Model question paper December 24. Model question paper December 24. 7 marks is the weight. 7 marks is the weight. Short and sweet question. A very good question to start off your simulation revision. An automobile production line turns out about 100 cars a day. If you remember, अपन अपने क्लासेस में बहुत क्वेश्चंस किए सिमुलेशन के. अगर आपको याद है, इफ यू रिकलेक्ट, डेंटिस्ट का किया था, वेयर लाइन में रुकना पड़ता है, वेटिंग टाइम, आइडल टाइम एंड ऑल दैट, वी हैड डन दैट आल्सो. But if you see the past examination questions, there was not that advanced question what we have done in our class. Okay, so in this revision, what I picked up is I picked up the past examination question and the model question paper. Okay, but remember one thing, what I've given in the class book, you need to do that. ऐसा नहीं कि यही करना है. This is the finishing touch, but don't forget to do that. Okay, चलो, can we start? An automobile production line turns out about 100 cars a day, but deviations occur owing to many causes. So how much are they producing per day? 100 cars. The production is more accurately described by the probability distribution given below. Now this is the table, very simple. Production per day, I hope you know this, we have already done this type of question in the class. Lorry का question किया था, where this many spaces in the lorry. So this is the production per day. This is the production per day and this is the probability. Okay, आपको दो columns दिए यहाँ पे, तो it is a very big column. Okay, so it is 95, 96, 97, 98, 100. उसके बाद again 101 and also link this column. Finished cars are transported across the bay at the end of each day by a ferry. आपने lorry वाला question किया था. If the ferry has space of only 100 cars, calculate the average number of cars waiting to be shipped and the average number of empty spaces on the boat. Use the following random numbers to simulate the data of above. Okay, चलो 7 marks. Can you please tell me how to do this? बहुत simple है, आराम से करना है. ठीक है, सबसे पहले whenever simulation question comes, your step number 1 is definite, and what is that? You need to prepare something called as 2-digit random number table. Can we do it? Yes, we can do it. Do we need to check the answers? Absolutely not. बाद में check करेंगे. I have all the answers ready in front of you only, but we don't need to do it. आपने वो solve करना है, ठीक है? So, can we start doing this, ladies and gentlemen?
Step number 1, table showing two digit random number. Okay, chalo. Now first is what? The production per day. First is what? The production per day. Next is what? The probability. उसके बाद क्या आएगा भाई साहब? Cumulative probability. And last, two digit random number. Okay, that's a slab. SLAB. Okay, so can we start? Production per day. Can we just copy it down? I want everyone to do it. I know this is there in your book. Already किया है. Tick mark नहीं करना है इसके ऊपर. Solve करना है. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 and 105. Okay, simple. Probability 0.08, 0.06. I'm just copied on the question. 0.07, 0.05, 0.15, 0.20, 0.04, 0.09, 0.17, 0.05 and 0.04. Now leave the question. Now you're completely on your own. Okay, now after doing this, what we do is you have to add up the probability. It is called as cumulative probability. Remember one thing, this step is there in every simulation question. कौन सा भी क्वेश्चन आने दो कि भाई साहब तुम्हारा पहला स्टेप यही है. अच्छा, और एक बात, in few questions probability is not given, so frequency is given. कोई बात नहीं, आपको total individual divided by total करना होता है, then you need to compute the probability. Okay, writing the examination they will give you probability. Okay, so can we start adding up the probability? 0.08 plus 0.06 कितना आता है सर? 0.14 plus 7.21 plus 5 0.26 plus 15 0.41 plus 20 0.61 plus 4 0.65 plus 9 0.74 plus 17 0.91 plus 5 0.96 plus 4 and this will be 1. Actually match होना चाहिए. Okay, everybody okay with this? Is everybody solving? Give me a yes or no fast. Solve करना है भाई साहब, आपको वापस बोल रहा हूँ, solve करना है. 2 digit random number, so pay attention. Many students get confused over here. They don't understand what to do exactly. Okay, so it's pretty simple. Don't analyze is at decimal. आपको पूरा number count करना है when you're doing for the last. You need to prepare a slab. How will you do it? The number which is there, consider 0.08 as full number 8. So how will you do it, sir? I will start with what? 0, 0, 2, 0, 7. The number which is there in that 8, it will go on to the next line. जो number वहाँ पे दिख रहा है वो next line में चला जाएगा. Okay, so 0, 8 and 13, 14, 20, 21, 25, 26, 40, 41, 60, 61, 64, 65, 73, 74, 90, 91, 95, 96, 99. Has everybody done till here and have you understood? Give me yes or no. जो नंबर वहां पे दिख रहा है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. जो नंबर वहां पे दिख रहा है आपको वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. Have you completed this table? Give me a yes or no. If you have done, then we will go ahead. Fast. चलो जल्दी. Have you done this? Yes or no? सबका हो गया क्या ये? Have you done this? Make sure कि this number is there, no? This number over here, 99. आपको यहाँ पे ये जो है ना, ये आपको 100 लिखना नहीं है. The column's name is 2 digit random number. Make sure you don't write 100 over there. It's 99 only. Okay? चलो. Have you done this? Simple. Now starts now the main thing. This is not main, yeah. This is very simple. इसमें है नहीं कुछ. The main thing is how you compute the simulation table. The examiner will obviously pay attention over there. For that, you need to understand the question. Pay full attention. Huh? This might be easy, but you need to use your brains over here. It might be any practical subject. प्रॉब्लम यही होता है ना कि आप जब अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेस ये सब करते हो तो आपके दिमाग में ऐसा होता है कि यार फैकल्टी इज टेलिंग एवरीथिंग, वी जस्ट नीड टू कॉपी डाउन एंड यू थिंक इट इज ऑल ओवर. नो,
It starts when you sit with your own book on that table. तब जाके दिमाग दौड़ेगा, यार कॉलम कौन सा करना है, यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे. That is why think for 2 minutes. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है. क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है भाई साहब, द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 100 कार्स पर डे. देयर इज अ फेरी, देयर इज अ बोट स्टैंडिंग आउटसाइड द फैक्ट्री गेट, और उसका जो कैपेसिटी है बोट का वो भी 100 ही है. तो भाई साहब आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 102 प्रोड्यूस किया, लेट अस से टुडे आई प्रोड्यूस, माय कंपनी प्रोड्यूसेस 102, so you tell me whether the boat will carry 102 or only 100. सर 100 ही कैरी करेगा ना, अरे जगह जगह ही नहीं है बोट के ऊपर, तो 100 का ही बोट है सिर्फ. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फैक्ट्री पे तुमको 2 गाड़ी रुकाना पड़ेगा? हाँ सब रुकाना पड़ेगा. दिस इज वन सिनारियो. सेकेंड सिनारियो, सर आपका प्रोडक्शन आज का हुआ 98, 100 नहीं हुआ, 98 ही हुआ सिर्फ. तो मुझे बताओ उस बोट में कितना आप डिस्पैच करोगे? 98 ही करेंगे ना, 100 थोड़ी करेंगे. तो भाई साहब बोट पे 2 चीजें आइडल रह जाएंगी, वो वैसे ही रहेंगे. तो वही यहाँ पे पूछा है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये पूछा है यहाँ पे, कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट एंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस ऑन द बोट. समझ में आ रहा है? ये 2 चीज तुमको समझ में आया क्या? ये वेटिंग और ये एम्प्टी स्पेसेस ऑन द बोट. सर वेटिंग तभी होगा जब तुम्हारा प्रोडक्शन 100 के ऊपर जाएगा, तो वेट करना पड़ेगा ना भाई साहब. आप खुद डिस्पैच कर सकते हो 100 के ऊपर. और एम्प्टी का मतलब क्या होता है? एम्प्टी का मतलब ये होता है कि तुमने प्रोडक्शन कम किया है, 100 से नीचे तुमने प्रोडक्शन किया है, तो भाई साहब बोर्ड के ऊपर एम्प्टी स्पेसेस रहने वाले, बिकॉज आपका प्रोडक्शन कम हुआ. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबॉडी? ये समझ में आया क्या भाई साहब? मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, सिमुलेशन इज अ बोनस क्वेश्चन. द ओनली थिंग इज प्लीज इन्वेस्ट टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली. ओके चलो ये हो गया आपका. नाउ आप क्या करेंगे? अच्छा और एक बात, अपन जब सिमुलेशन करते हैं ना, अपन जब सिमुलेशन करते हैं, so the point is we don't understand कि for how many days you need to simulate यार. So for that you need to count the number of random numbers they're given. कभी कभार if you're in a luck, अगर आप अच्छे लक में हो तो एग्जाम में वो क्लियर कट आपको देते हैं कि प्लीज डू इट फॉर 10 days. बट अगर दिया नहीं है तो कैसे समझोगे कि कितने दिन के लिए करने का है? तो रैंडम नंबर काउंट करेंगे आप. कितना काउंट करेंगे यहाँ पे? पे अटेंशन प्लीज एवरीबॉडी, आई वांट एवरीबॉडी टू पे अटेंशन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डेज. तो आप चेक करेंगे यहाँ पे, आप चेक करेंगे आंसर में आपको 15 डेज का टेबल मिल जाएगा. 15 डेज. तो 15 डेज कहां से? रॉकेट साइंस नहीं, वेरी सिंपल, जस्ट काउंट द रैंडम नंबर का. ओके चलो कैन वी स्टार्ट डूइंग इट बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन? इथंच करू का साईडला? इथंच करू. स्टेप नंबर 2 सिंपल. ओके सिमुलेशन टेबल नाम देंगे आप प्लीज, इसके लिए आपको मार्क्स. ठीक है सिमुलेशन टेबल, सिमुलेशन टेबल, सिमुलेशन टेबल. ओके चलो फर्स्ट थिंग डे. डे कितना आएगा भाई? 15 आएगा, 15. ठीक है फिर नेक्स्ट योर रैंडम नंबर जो ऑलरेडी दिया है उन लोगों ने. ठीक है based on random number you go and check in the first table कि what is the production, how much is the production per day, how much is the production per day. okay ये हो गया आपका. उसके बाद आपके कॉलम आएंगे 2, number of cars waiting to be shipped and number of empty spaces. number of cars waiting and number of empty spaces, number of empty spaces on the boat. ये बोट है ना, we have done the same question by the way in your book. वो लॉरी का किया था, ठीक है ट्रक का था. number of cars waiting to be shipped, to be shipped. okay with this? can you start doing it everybody? days. so what you need to do is you need to write 15 days. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. I hope you have got 15 days कहां से आया भाई साहब? 15 days. next random number, pick it from the question only. where is the question? where is the question भाई साहब? यहाँ पे 1456. और एक बात कॉपी करते हो वो बराबर कॉपी करो. one thing guarantee everything will go wrong. 1456 45. take your time and copy it. 1456 45 98 32 98 32
47 63, 47 63, 12 and 20, 12 20, 18 77, 18 77, 65 30, 65 30, 08 and 90, 8 and 90. Everybody okay till here? Everybody okay till here? Acha. The moment you have done random numbers, random ho gaya. Now you need to go in the first step. What you have done, you have to go and check what the slab. ठीक कौन से slab में आ रहा है वो, ठीक है? और वही check करके आपको production per day वहाँ पे लिखना है. Okay, everyone. Now 14, in which slab 14 is coming? Where is coming 14? Pay attention. 14 कहाँ पे आ रहा है सर? यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे आ रहा है. Third slab में आ रहा है. Third slab में 14 आ रहा है. Okay. Go and check कि 14 is how much? So 97. 97. Please start doing. Don't wait for me to do it. Okay? आप खुद करेंगे, copy paste करना नहीं है. आप खुद चेक करें, म्यूट पे डाल सकते हैं 2 मिनट के लिए, आप खुद सॉल्व करेंगे, then cross check your answer with the table. Okay? 56 it comes over here. Where is 56? Over here. This is 100. 45 यहाँ पे आता है 100. 98. 98 comes where? In the last. 105. Next 32. ऊपर से आता है ये 99. 99. 47. 47 comes over here 100. Next 63. 101. Next 12. 96. 20. 97. 18. 18 कुठे गेलं? 18 इथं आहे. 97. 77. 103. 65. 102. 30. 99. 8 कुठं आता है? 96. 90. 103. 103. Everybody okay till here? Everybody okay till here? Is your answer and my answer matching? Is your answer and my answer matching? Everybody, yes or no? क्या आपका आंसर वही आंसर मैच करता है? चेक करेंगे एक बार प्लीज. So this is the most important column, the green वाला column. If that is okay, your entire thing will be okay. ठीक है? Let me like this and your answer is matching or what? Confirm करेंगे जल्दी, everyone. 99, 100. ठीक है, चलो बाद में चेक करेंगे आप पर. चलो, now can we start doing the last column please? Can we start doing last column? प्रोडक्शन पर डे सिर्फ 97 आपका हुआ है. प्रोडक्शन पर डे इज ओनली 97. तो ये बात मुझे बताओ यार, 97 अगर हुआ है, तुम्हारा बोर्ड का कैपेसिटी 100 का है, तो मुझे आप एक बताओ कि आप डिस्पैच में कितना करेंगे सर? डिस्पैच 97 ही करेंगे ना सर. तो हाउ मच आर द एम्प्टी स्पेसेस ऑन द बोर्ड? सर 3. समझ में आ रही है? आपको पूरा टेबल खत्म करना है. अगर 100 है तो बात सवाल ही उतना नहीं है. अगर 100 इज देयर, आप 100 डिस्पैच करेंगे, नथिंग विल बी आइडियल एंड ऑल दैट स्टफ. डैश 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 105. अरे बहुत प्रोडक्शन किया तुमने यार. प्रोडक्शन 105 हुआ है. नाउ द पॉइंट इज यू नीड टू वेट 5 कार्स इन योर फैक्ट्री. ये 5, ये डैश 99 कम कर दिया आपने वापस. ठीक है, समझ में? आपको पूरा टेबल खत्म करना है. 1 डैश डैश ज्यादा किया आपने. 1 डैश डैश 4 डैश 3 डैश 3 3 डैश 2 डैश डैश 1 डैश 4 3 डैश. आई होप आपके आंसर आ गए. 5 + 1 + 3 + 2 + 3 इज योर आंसर 14 ओवर हियर. यहाँ पे 3 + 1 + 4 + 3 + 3 + 1 + 4 इज योर आंसर 19 ओवर हियर. बट क्रॉस चेक करते हैं मॉडल के साथ क्या आंसर है, फिर आगे जाएंगे. 40 and 19 इज योर आंसर. इज योर आंसर 14 and 19 एवरीबॉडी? क्या आपका आंसर 14 और 19 आया है क्या? एक बार हाँ बताएंगे मुझे, आपका आया क्या आंसर? सिर्फ हाँ में हाँ मत करो. ए ईशान, ए ईशान, ए ईशान, आपने शायद से एक चीज, एक अपने एडिशन नहीं किया है. मेरा आंसर 19 आया है, आपका 18 आया आंसर. एवरीबॉडी, एवरीबॉडी प्लीज गिव मी अ यस और नो, अ कॉन्फिडेंट यस और नो कि आपका आंसर आया है क्या 14 19. फिर आगे जाएंगे. देन वी विल गो अहेड. Then we will go ahead. 14 and 19. 14 and 19. Everybody,
Have you got 1419 answer? Number of cars waiting to be shipped is 14 and number of empty space on the board is how much? 19. सबका आंसर आया क्या, एक बार कंफर्म करेंगे प्लीज. चला सगळ्यांचे उत्तर पाहिजे 1419. देन वी विल गो अहेड. मृदुला झाले का चेक कर एकदा लवकर. जानवी चेक करेंगे प्लीज. स्वस्तिका चेक करेंगे. पशा आंसर आले का बघ. फिर राधिका, जितने लोग देख रहे हैं एवरीबॉडी प्लीज गिव मी आंसर 1419. ओके, if this is done you are good to go. This is done, you are good to go. बट भाई साहब आप एक गलती मत करेंगे, एक गलती नहीं करेंगे. सर ये तो हो गया ना. अभी अभी अपन वापस क्यों उस क्वेश्चन पे जा रहे हैं? जस्ट टू शो यू एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्लास आल्सो दिस व्हाट कि प्लीज अंडरस्टैंड दे वांट एवरेज. Sir, what if I show them only 1419? He will cut. He will give you marks, but he will not give you 7 marks because the question talks about average. ये दिमाग में डाल के रखो, अगर एवरेज तो चाहे आपको एवरेज ही उनको देना पड़ेगा. तो एवरेज कैसे निकालेंगे? सिंपल है, डिवाइड बाय 15 करके आंसर देंगे आप मुझे. प्लीज डिवाइड बाय 50 and give me an answer. क्या होगा? पुट गेलो इट 14 divided by 15 and this will be 19 divided by 15 and then you will get your 7 marks. 15 0.93 और यहाँ पे कितना था? 19 divided by 15. This will be 1.266. Now your question, your answers come. And now your answers come. Everybody okay with this? Everybody okay with this? And yes, you will get the answer over here. आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में. That will be 0.933 and 1.266 per day. Everybody okay with this? Okay. And you won't believe that this question they've asked same again, same वापस पूछा उन लोगों ने. ये हो गया आपका. Can I go ahead everybody please? See. Now in the next model question paper उन लोगों ने वापस वही क्वेश्चन पूछे. अभी ऑब्वियसली वी आर नॉट डू दिस, ये नहीं करने वाले अपन, बाद में कर सकते प्रैक्टिस के लिए. मैंने वहां पे आंसर्स भी पेश कर दिए. ठीक है, सेम क्वेश्चन इज दिस 100. ओनली द थिंग इज व्हाट, नंबर्स चेंज किए उन लोगों ने यहाँ पे. ठीक है, सेम वही सेम क्वेश्चन है अपना. ठीक है, पहली वाला. यू नो वांट टू डू दैट. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे. प्लीज. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाट हैपेंड? I was talking about this question. See, model question paper December 23 set 1 we have already done in the class. हमारे क्लास में ऑलरेडी किया है ये. एक बार जस्ट एक क्विक रिवीजन करेंगे. 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. A retailer is dealing with FMCG items. The table as given below presents the past data of demand per week in 100 kgs with frequency. Okay, I have just told you couple of minutes back. The moment frequency is there, इसका यही मतलब होता है कि probability दिया नहीं, आपको probability निकालना पड़ेगा. बहुत सिंपल होता है. Demand per week is given, frequency is given. उसके बाद using the following sequence of random number generate demand for the next 10 weeks. Clear cut mention किया कि अगले 10 वीक की आपको क्या करना है, सिमुलेशन करना है. ठीक है, also find out the average demand per week. Please do not miss out on that. You will do the entire answer and you will forget this. That is why I'm focusing on that word only, average. आपको average निकालना पड़ेगा. आपके सामने 10 वीक के रैंडम नंबर दिए हुए हैं. ओके, चलो, can we do this everybody? Can we do this? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कर देंगे. ठीक है, चलो फास्ट. डिमांड पर वीक, तो इसमें पहले आपको क्या करना होता है भाई साहब? सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होता है. हाउ यू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी? वेरी सिंपल. चलो, स्टेप नंबर वन. ओके, 2 डिजिट रैंडम नंबर. हाउ विल वी डू इट? सर सबसे पहले डिमांड पर वीक दिया और फ्रीक्वेंसी दिया. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज डिमांड, फ्रीक्वेंसी, और इससे ही मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी. फिर मेरा नॉर्मल कॉलम आएगा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में मेरा आएगा 2 डिजिट रैंडम नंबर. ओनली वन कॉलम इज एक्स्ट्रा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी बिकॉज इट इज नॉट गिवन. ओके, कैन वी राइट दिस? डिमांड कितना है भाई साहब? 0, 5, 10, 15, 20 and 25. This is the demand. Frequency 3, 7, 5, 11, 18 and 6. Okay, now leave the question. Now we'll do it on our own. Okay, now how to compute the probability? बहुत सिंपल है. आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना पड़ता है. ठीक है, कैसे निकालेंगे? 3 plus 7 plus 5 plus 11 plus 18. अच्छा, 3 plus 7 plus 5 plus 18, 11 plus 6 कितना आता है? 50. This is 50. Okay, this is the total of frequency. How will you do probability? So
individual divided by total, individual divided by total, what is the frequency of one as compared to total, तो कैसे करेंगे, 3 divided by 50 कितना आता है ये 0.06, 7 divided by 50 कितना आता है 0.14, 5 divided by 50 ये कितना आएगा 0.10, 11 divided by 50 ये कितना आएगा 0.22, 18 divided by 50 ये कितना आएगा 0.36 और 6 divided by 50 ये कितना आएगा 0.12. Has everybody done till here? Because if you have done till here, don't wait for me, complete the entire answer. आप पूरा आंसर खत्म करना है, okay? Have you done till here, everybody? टोटल कर देंगे, अभी क्यूमुलेटिव का एडिशन करेंगे 0.06 प्लस 14, 0.20, 0.30, next 0.52, 0.88 and 1. 2-digit random number, please consider as the whole digit and that number goes in the next line. So 0, 0 and 0, 5, 0, 6, 19, 20, 29, 30, 51, 52, 87, 88, 99. I hope you have done till here. I hope you have done till here. यहाँ तक आपका होना चाहिए, यहाँ तक आपका होना चाहिए. 2-digit random number. Are you done with this? 88 to 99, 88 to 99 आपका हो गया. चलो, if you have done with this, now step number 2. Step number 2 will be simulation table. Will be simulation table. Will be simulation table. Okay. Now understand the question first. Question क्या पूछे? It's a very simple question actually. मतलब उन्होंने ऐसा ही पूछा है कि you have to only do what. One second, क्या हो गया? One second. Where is the question? Generate the demand for next 10 weeks. So आपके कॉलम कैसे आएंगे यहाँ पे? एक तो वीक्स आएंगे जो ऑलरेडी दे हैव टोल्ड अस 10 वीक्स. नेक्स्ट विल बी योर रैंडम नंबर एंड वन मोर कॉलम विल बी डिमांड. इट इज वेरी वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ओके, वी हैव 10 वीक्स, 7, 8, 9 और 10 रैंडम नंबर्स दिए गए इन लोगों ने. 27, 43, 27, 43, 50, 11, 16, 36, 58, 64, 51 and 38. Okay, now you can do it on your own. Okay, चलो everybody. 27 कहाँ पे आता है भाई साहब? 27 कहाँ पे आता है सर? थर्ड वाले में आता है. डिमांड इज 10. 43 कहाँ पे आता है? 43. 15. 50 कहाँ पे आता है? फोर्थ में. 15. 11, 5. 16, 5. 36, 15. 58, 20. 64, 20. 51, 15 और 38, 15. Is your answer over? Is your answer over? ये आपका आंसर खत्म हुआ क्या? आप ये कंफर्म करेंगे प्लीज. ये आपका डिमांड हो गया. दिस इज योर डिमांड. 10 plus 15 plus 15 plus 5 plus 5 plus 15 plus 20 plus 20 plus 15 plus 15. 135. ओके, एवरेज पूछा है उन लोगों ने. एवरेज पूछा है 135 डिवाइडेड बाय अपन 10 कर देंगे. 13.5 should be your answer in the module. 13.5 should be answer which should actually match with your answer. 13.5 आपका आंसर मैच हो रहा है क्या? कंफर्म करेंगे प्लीज. Is your answer matching with 13.5? Everybody, is your answer matching with 13.5? Is your answer matching with 13.5? Is your answer matching with 13.5? Everyone, average निकालना है. It's the average, okay? Average निकालना है आपको 13.5. Done. I hope you are comfortable with here now. These are your model question papers, huh? These are your model question papers, okay? These are your model question papers. चलो.
Can I tell you one more thing? It's a very good thing actually. June 24 में, and has everybody completed a year? Can I go again? These was model question paper. मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, please do not open model question paper again. ये सब कुछ है, आपको सिर्फ इसका प्रिंट आउट निकालना है. Okay? Everything is there in one PDF only, starting from FM. आपको टाइम सेव कर रहा हूं मैं, दैट इज वाई ये पीडीएफ है. और इस पीडीएफ में आपको 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जस्ट टू रिमाइंड यू 3 अटेम्प्ट्स आर देयर इन 2022 सिलेबस. वो तीनों अटेम्प्ट के क्वेश्चन इसमें डाले मैंने, ठीक है. जहां पे नहीं है वो ड्रॉप किया है, जहां पे है वहां पे आंसर के साथ यहाँ पे डाला है मैंने सब कुछ, ठीक है. जून 24 एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये वाला सिमुलेशन वाला, और मेरे हिसाब से करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपने अभी किया है. बोट वाला किया था, इसमें से अभी इन्होंने ट्रक डाला है, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ ट्रक डाला इन लोगों ने. आई डोंट थिंक यू नीड टू डू इट. See, it's a very very simple question. I'll read it out. देखो आपको जम रहा है क्या ये क्वेश्चन. Production line turns about trucks per day. Fluctuations occur. The production might be as follows. Okay, finished trucks a day. It's the same. 7 मार्क को पूछा है, सेम वही. Empty spaces and your waiting time. Okay, चलो ठीक है. CPM PERT is there now. CPM PERT आपने को लेने का है. Simulation is over. This was simulation, and now we will start with what? CPM PERT. Okay, CPM PERT. There is no break as usual. कल की तरह ही करेंगे, ये खत्म कर देंगे अपन. Okay, CPM PERT is the most important chapter of your OPM. Most important and the most easiest. If you recollect, while doing this in the class, we have given ample of time to CPM PERT. अगर आपको recollect होता है तो, ठीक है. In this entire CPM PERT thing, we will solve the question. But before I start with solving, आपको थोड़ा सा मैं ये करता हूँ कि आपको क्या क्या करना है. सबका ध्यान है यहाँ पे, everybody paying attention. CPM stands for Critical Path Method, Program Evaluation Review Technique. What exactly it is? So we need to show them कि how a particular project is completed. उसका sequence कैसा है, आप ध्यान देंगे प्लीज. सीक्वेंस कैसा है उसका, एंड विच इज द मोस्ट क्रिटिकल पाथ. सबसे क्रिटिकल का पाथ का यही मतलब होता है कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ. देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु विल नॉट, मतलब अगर आपने रट्टा मारा रहेगा आपको ये शायद से नहीं ग्रास्प होगा. ओके, चलो पे अटेंशन. सो इन CPM PERT the first thing you need to do is the network diagram. सबसे पहले आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है. बट while doing network diagram, एक चीज दिमाग में रखना है, there are rules for drawing network diagram. Okay, so whenever you're drawing, the arrow needs to go forward, it needs to touch the event. आपको event को touch करना होता है. Make sure you're not drawing the arrows पीछे, वो allowed नहीं है. Diagonal you can do like this, but you cannot go backwards. That's the rule. Second, there's something called as forward and backward computation. There's something called as forward and backward computation. Forward and backward computation. Next, आपको मैं दिखाऊंगा when we'll solve it. Okay. There's one more thing where they will ask you the total float. आपको total float पूछेंगे. Pay attention. And if you recollect classes में जब अपन ने किया है, मैं आपको on the spot बताया कि you can cross check your CPM PERT answer on the spot. आप on the spot पे कर सकते हो, and you can actually वहां पे आपको समझेगा कि आपको 7 मार्क मिलने वाला कि नहीं. Okay, मैं आपको बताया कि टोटल फ्लोट पे 0 कब आना चाहिए. I'll tell you everything. फोर्थ पॉइंट ऐसा है इसमें कि भाई साहब जो आपके एक्टिविटीज हैं उसमें आपको ड्यूरेशन दिया रहता है, बट इन सम क्वेश्चन ड्यूरेशन इज नॉट देयर. तो उसमें पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली ये सब कुछ आता है. So you need to find the duration in few questions. कैसे फाइंड आउट करना है? We'll do it. उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा, वो भी I'll tell you how to do it. So the main questions will be revolving around this only. If I show you the past examination questions, they ask very simple questions. ऐसा कुछ difficult नहीं है. In fact, we have done difficult question in the class also. Okay. So now can we start? एक काम करते हैं, एक बड़ा वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सब कुछ है. हाँ, अरे और एक भूल गया मैं. There's one more thing which will ask you while drawing in few examinations. They have only asked you to draw network diagram. बाकी कुछ पूछा नहीं. But network diagram draw करते वक्त you have to pay 1 or 2 minutes attention. If directly 1 to 2, 2 to 4, 2 to 5 ऐसा दिया तो it makes your life more easier. But in some question there is preceding activity. There is something called as preceding activity. उसमें आपको 1 to 2, 2 to 3 नहीं दिया जाता है, उसमें आपको
ए के पीछे बी है, सी के पीछे डी है, आपको वैसे करना पड़ता है. इट्स अ बिट ट्रिकी. So please concentrate on these wala network diagrams a lot more rather than 1 to 2. 1 to 2 is very easy. Okay. So can we solve? Can we start solving, everybody? Mm. I'm finding a question which is the most big wala question. इसमें ड्यूरेशन दिए. चलो ये शुरू यहाँ से करते हैं अपन. We start from here and then we will take it ahead. Okay. चलो. This is June 24 examination question. This is June 24 examination question. तो इसने क्या पूछा है? So in simulation we have done questions till illustration 47. उसके आगे करने का, उसके एज आगे नहीं करना. क्या आगे नहीं करना है? सिमुलेशन में आपने इतना किया तो भी चलेगा. ओके, pay attention now. Zotec Limited has a contract for installation of a die casting machine. The following table gives the various activities in this job and normal duration. ये आपको सामने. So this is what I was talking about. But remember one thing, मैंने कल भी बताया कि ये entire content वापस आपको final level में advanced questions पूछेंगे. For internal level they will ask you very primary question, very preliminary questions. Okay, अभी देखो ना, आपको इन लोगों ने यहाँ पे प्रीसिंग एक्टिविटी भी दी है. But the luckiest part is what they've also given you what? The normal also. So if this would not have been given, then you need to use your brains, because if only this is given, आपको थोड़ा सा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. It's very simple. Okay, but we'll solve according to this. It's an examination question. 7 मार्क को पूछा है. Okay, क्या क्या पूछा है? Pay attention please. Design the PERT network diagram and indicate all paths to it, which we will do it. Indicate the critical path. अपन कैसे निकालते हैं आपको पता ही है. We do random paths. आप random paths select करते हैं और फिर आप ये select करते हैं कि सबसे longest वाला कौन सा है. And analyze, assess total flow, free flow, independent flow. Perfect question to start your division. In fact, we have done questions in your class. You can do use that also, और आप ये भी use कर सकते हैं. ठीक है, चलो सबसे पहले can we start doing network diagram? आप खुद भी solve करेंगे, मैं भी खुद solve करूंगा. ठीक है, चलो आपके सामने मैंने question भी open किया. आप सबसे पहले network diagram draw करेंगे. Everyone. I'll start from here only. 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4. अच्छा ऐसा है क्या? तो हमने काम करते हैं ना, ऐसा निकाल. 1 to 2, फिर 2 to 3, उसके बाद 2 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 3 to 5, 4 to 5. This is like this. 4 to 5, 5 to 6, 5 to 6, and 6 to 7, and 6 to 7. Okay, क्या आपका डायग्राम हुआ है? Something like this it should look like. Something like this. We'll see the, इनका भी ऐसे दिख रहा है कुछ. ठीक है, चलो everybody okay. 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 4 to 5, 5 to 6 and 6 to 7. Make sure you are checking every activity the moment you draw. Okay, एक बार ड्रॉ करने के बाद आपको खुद को चेक भी करना है. ठीक है, अच्छा. Now can we start off with the forward computation, backward computation? Why? Because they've asked you total flow. So we need EST, LST, EFT, EFT. आपको पता नहीं सब कुछ करेंगे आराम से. ये आपका नॉर्मल नेटवर्क डायग्राम हो गया. अभी इसमें अपने को सबसे पहले क्या करना है? The first thing what you need to do is write down the duration. Okay, 1 to 2 का कितना है भाई साहब? 1 to 2 का 2 है. 2 to 3 का कितना है? 2 to 3 का it is 3. 2 to 4 का कितना है? सर 2 to 4 का it is 15. 2 to 5 का कितना है? तो 2 to 5 का है 3. नेक्स्ट 3 to 5 का कितना है? 12. 4 to 5 का कितना है? 8. 5 to 6 का कितना है? 3. एंड लास्ट कितना है? 12. ओके, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, नाउ कैन आई जस्ट जूम इन लाइक दिस नाउ एंड कैन वी स्टार्ट फॉरवर्ड कंपटीशन, बैकवर्ड कंपटीशन? एवरीबॉडी विद मी, चलो स्टार्ट. सर सबसे पहले मुझे इसमें बॉक्स बनाने पड़ेंगे. सबसे पहले मुझे इसमें बॉक्स बनाने पड़ेंगे फॉरवर्ड कंपटीशन और बैकवर्ड कंपटीशन के लिए. ठीक है, फॉरवर्ड कंपटीशन और बैकवर्ड कंपटीशन के लिए मुझे यहाँ पे बॉक्स बनाने पड़ेंगे. डोंट वेट फॉर मी, यू शुड डू इट. ओके,
चलो, जिसको नहीं आ रहा है, जिसको नहीं पता है, वो देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले अपन फॉरवर्ड कंपटीशन करते हैं, देन बैकवर्ड। आई हैव आल्सो टोल्ड यू कि हाउ यू शुड सॉल्व दिस थिंग, ओके। स्टार्टिंग विद जीरो, हमेशा विल स्टार्ट विद जीरो। तो सबसे पहले अपने को टू का निकालना है फॉरवर्ड कंपटीशन। तो आप कैसे करते हैं? तो आपको ऐसा बोलना पड़ता है कि दो को कितने एरो टच हो रहे हैं। वेरी सिंपल, टू को कितने arrow, सर एक ही एरो टच हो रहा है, किससे टच हो रहा है? एक से आ रहा है। तो जीरो प्लस टू विल बिकम हाउ मच? टू। जीरो प्लस टू विल बिकम टू। नेक्स्ट, तीन का निकालेंगे, तीन नंबर का। सर तीन नंबर को कितने एरो टच हो रहे हैं? कितने एरो टच हो रहे हैं? सर एक ही एरो टच हो रहा है, वो भी दो से आ रहा है। सो टू प्लस थ्री, ये कितना हो जाएगा? सर ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा पांच। ये हो जाएगा पांच, ठीक है। अभी चार नंबर का करते हैं। एक ही एरो टच हो रहा है, वो भी आ रहा है दो नंबर से। इट इज 15 प्लस टू, दिस विल बी 70, दिस विल बी 70। अभी पांच नंबर का चेक करते हैं। अभी पांच नंबर को तीन एरोस टच हो रहे हैं, तीन एरोस। तो वी विल डू विच एवर इज ग्रेटर। एक एक चेक करते हैं पहले। सबसे तीन नंबर का चेक करते हैं। सो इट इज 12 प्लस 5, इट इज हाउ मच? 70। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 70, ठीक है। उसके बाद दो नंबर का भी आ रहा है, 2 प्लस 3, दिस विल बिकम हाउ मच? वन सेकंड, 5 प्लस 12 हो गया, ये हो गया 2 प्लस 3 5, और ये हो गया 17 प्लस 8, ये कितना आता है? 25। तो मुझे एक बताएंगे सबसे हाईएस्ट कौन सा? सर 25 है। सो आई राइट 25 ओवर हियर, whichever is higher when you are going, whichever is higher forward competition के लिए, ओके। नेक्स्ट, सिक्स नंबर के लिए एक ही एरो टच हो रहा है, 25 प्लस 3, ये कितना आएगा? सर ये आएगा आपका 28, ये आएगा आपका 28, और लास्ट में कितना आएगा? 28 प्लस 12 कितना आएगा? ये आएगा आपका 40। कैन यू प्लीज टेल मी कि आपका फॉरवर्ड कंपटीशन 40 तक हुआ है क्या? कि आपका फॉरवर्ड कंपटीशन 40 तक हुआ है क्या? इफ इट इज अ यस, प्लीज टेल मी हुआ है, देन वी विल स्टार्ट विद बैकवर्ड कंपटीशन। देन वी विल स्टार्ट विद बैकवर्ड कंपटीशन। हैव यू फिनिश्ड फॉरवर्ड कंपटीशन टिल 40? हैव यू फिनिश्ड टिल 40, यस और नो? कि आपका 40 तक हुआ है? अगर हुआ है तो हम बैकवर्ड शुरू कर देंगे, पर पहले मुझे कंफर्मेशन दो कि आपका 40 तक हुआ है क्या नहीं। If you have done till 40, do let me know whether you have done till 40, then we will go ahead. Then we will go ahead. And if you are very comfortable in this, then you are on the right track. अगर आपका ये हुआ है, वो भी टाइमिंग में हुआ है, तो आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो भाई साहब, ठीक है। चलो एक बार अभी बैकवर्ड शुरू करते हैं। यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन। शुरू कहां से करते हैं सर? ये 40 से ही शुरू करते हैं। वी स्टार्ट विद 40। फॉरवर्ड कंपटीशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0, बैकवर्ड कंपटीशन स्टार्ट्स ऑलवेज द लास्ट नंबर व्हिच इज 40, ओके। चलो नाउ इसको अपन कैसे बोलते हैं भाई साहब? अपन टच नहीं देखते, अभी उस इवेंट से कितने एरोस बाहर गए, हाउ मेनी एरोस हैव गॉन आउटसाइड, वी डू चेक दैट। सो सर 6 से एक ही एरो बाहर गया है, और वो भी जाके 7 को टच कर रहा है। तो 7 का नंबर कितना था? 40। 40 माइनस 12 कितना आता है? सर ये आएगा 28, ये आएगा 28। फॉरवर्ड जाते हैं प्लस करते हैं, पीछे आते हैं माइनस करते हैं अपन, ठीक है। अभी अपन 5 नंबर का चेक करते हैं। पांच में से कितने एरोस बाहर गए? सर एक ही एरो बाहर गया है, और वो भी 6 को टच हो रहा है। वेरी गुड। 28 माइनस 3, 28 माइनस 3 कितना आता है? ये 25 आता है। ये कितना आता है? सर 25 आता है। ओके वेरी गुड। नाउ चार नंबर चेक करेंगे। चार नंबर, तो चार नंबर से कितने एरोस बाहर गए? सर एक ही एरो बाहर गया है, और वो भी पांच नंबर को जाके टच कर रहा है। 25 माइनस 8, 25 माइनस 8, ये कितना आता है भाई साहब? ये आएगा आपका 17, ये आएगा आपका 17। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, ओके। तीन नंबर चेक कर, तीन नंबर से कितने एरो बाहर गए? सर एक ही एरो बाहर गया है, वो भी पांच नंबर का टच हो रहा है, ठीक है। अभी पांच नंबर का आप मुझे चेक करेंगे। 25 माइनस 12, 25 माइनस 12, ये कितना आता है? सर ये 13 आता है। ये कितना आता है? 13, ठीक है। फिर दो, एक मिनट से, तो दो से तीन तीन एरो बाहर गए, तीन तीन एरो। तो भाई साहब अपन जब फॉरवर्ड कंपटीशन करते हैं तो विच एवर इज हायर करते हैं, जब बैकवर्ड करते हैं तो विच एवर इज लेस। तो एक काम करेंगे, दो नंबर से तीन एरोस बाहर गए, तो तीन नंबर को टच हो रहा है, पांच को टच हो रहा है, और चार को भी टच हो रहा है। तो पहले एक एक चीज करते हैं, पहले एक करते हैं। 13 माइनस 3, ये आएगा आपका 10। फिर 25 माइनस 3, ये आएगा आपका 22, और ये आएगा 17 माइनस कितने है? 15, ये आएगा आपका 2। विच एवर इज लेस क्या है सर? दो नंबर इज लेस, सो आई राइट इट 2, और ये आपका 0 है। आर यू गेटिंग दिस? Has everybody done till here? Has everybody come till 0? Please come. आपका लास्ट आंसर 0 आना चाहिए भाई बड़े। Has everybody done till here? Has everybody done till here? अगर आपका आंसर 0 आया है, कि सबका आया है पहले बताओ। अगर 0 आया है तो आपको लाइक का बटन ठुकना है। लाइक मुझे बढ़ने चाहिए वहां पे। देख रहे तो सब लोग, लाइक कोई नहीं करता, कैसे लोगे तुम लोग ने? डू इट फास्ट, इमीडिएट इफेक्ट। पहले 0 आया कि वो बताओ, वो इंपॉर्टेंट है। 0 आंसर आया कि वो पहले बताओ मुझे। इज द आंसर 0? यस और नो?
If your answer is 0, then only press the like button. अगर नहीं है तो वापस सॉल्व करके फिर like का बटन प्रेस करो. Everybody okay till here? Everybody okay till here? सबका हुआ है क्या? 0 तक आया क्या आपका? 0 तक हुआ है क्या? Give me yes or no fast. Give me a yes or no. Immediate, immediate. जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी बताएंगे, जल्दी. फास्ट में बताएंगे. सबका 0 तक हुआ है? This is called as forward computation and backward computation. Okay. Now, the moment you are done with this, then we'll proceed ahead with making the big table. आपको अभी टेबल बनाना है, ठीक है? आंसर बाद में चेक कर लेंगे अपन, ठीक है? ये आपका हो गया 1 नंबर, ये आपका हो गया 1 नंबर. अच्छा भाई साहब, ladies and gentlemen, can you please tell me one thing? Can you please tell me one thing? Can you please tell me the random paths? अब random paths भी बताएंगे कैसे आते हैं? सर, random paths अपन easily निकालेंगे. और भाई साहब आपको अभी ही बताना है मुझे क्रिटिकल पाथ कौन सा है. नाउ ओनली यू नीड टू टेल मी व्हाट इज क्रिटिकल पाथ. तो मुझे आप बताएंगे द स्टार्टिंग इवेंट इन दिस डायग्राम इज 1, स्टार्टिंग इवेंट इज 1 एंड द एंड इवेंट इज 7. ओके सर, अब एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछता हूं मैं. 1 से 7 तक आप कौन से रास्ते से जा सकते हैं? 1 से 7 तक आप कौन से रास्ते से जा सकते हैं? सर एक एक रास्ता लिख देंगे अपन यहाँ पे. वी विल राइट डाउन द पाथ्स ओवर हियर एवरीबॉडी. आपको 5 के साथ मुझे ड्यूरेशन भी बताना है. आपको 5 के साथ मुझे ड्यूरेशन भी बताना है. कैन यू स्टार्ट दिस? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 6, 6 to 7. ये आपका हो गया एक पार्ट. इमीडिएटली अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप ड्यूरेशन भी लिख देंगे, ठीक है? 1 to 2 कितना है? 2. 2 to 3, 3. 3 to 5, 12. 5 to 6, 3. और लास्ट कितना है? 12. ये कितना आता है सर? ये आता है 32 या 32. और रास्ता बताएंगे, और रास्ते कौन से सर बताएंगे ना? 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 6 to 7. ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. 2 plus 3 plus 3 plus 12. ये हो गया आपका 20. ये हो गया आपका 20. और कुछ रास्ता है क्या? हाँ सर, और भी रास्ता है ना. 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6 and 6 to 7. बताएंगे इसका कितना आता है ड्यूरेशन भाई साहब? टोटल 2 plus 15 plus 8 plus 3 plus 12. ये आएगा आपका 40. ये आएगा आपका 40. क्या आपने 5 आपके बुक में लिखे हैं क्या? क्या 5 आपने बुक में लिखे हैं क्या? आप क्या मुझे बता सकते हैं कि विच इज द क्रिटिकल पाथ? विच इज द क्रिटिकल पाथ? कैन आई से दिस इज योर क्रिटिकल पाथ? दिस इज योर क्रिटिकल पाथ. ये आपका क्रिटिकल पाथ है. दिस इज योर क्रिटिकल पाथ. दिस इज योर क्रिटिकल पाथ. एवरीबडी यस और नो? एवरीबडी यस और नो? 1 2 4 5 6 7 40 days. Is this your critical path? Give me a yes or no please. Is this your critical path? आपके बुक में मैं आपको वही बोल रहा हूँ. एक क्वेश्चन बराबर करो. अपन कैसे करेंगे? We'll do variety. Why we are solving this question? Because in this forward competition, backward competition है, ठीक है? ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट सब कुछ निकालेंगे. उसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे ड्यूरेशन मिसिंग है. पहले ड्यूरेशन निकालेंगे और फिर ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? So everybody to be complete concentrated. आपको ओपीएम खत्म करना है, ध्यान है आपका. और संडे तक ओपीएम एसएम पूरा खत्म करना है आपको, ठीक है? चलो, क्रिटिकल पाथ हो गया आपका. अच्छा, इसके बाद गिव मी 1 सेकंड. हेलो, ठीक है, सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल था, मम्मी का कॉल था, लेना पड़ता है. पे अटेंशन. 1 2 4 5 6 7 40 critical path. Next, now tell me one thing. After this, what you will do? After this,
सर अभी अपने को टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, अभी अपने को टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इन टेबल यू नीड टू शो एवरीथिंग, द होल थिंग। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे सर, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज। इसके बाद क्या निकालेंगे मुझे बताओ, आफ्टर एक्टिविटीज, आफ्टर एक्टिविटीज सर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। आफ्टर दिस ड्यूरेशन अपने को स्टार्टिंग से करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। आई होप यू नो ऑल ऑफ दिस स्टफ। क्रॉस चेक करते हैं अपन, एक्टिविटीज, ड्यूरेशन, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। इसके बाद आपका आता है टोटल फ्लोट, इसके बाद आपका आता है टोटल फ्लोट, इसके बाद आपका आता है स्लैक ऑफ, स्लैक ऑफ, हेड इवेंट, हेड इवेंट एंड स्लैक ऑफ, स्लैक ऑफ, टेल इवेंट, और लास्ट में आपका आएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट, लास्ट में आपका आएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। पूछेगा इन लोगों ने इंडिपेंडेंट फ्लोट कहां तक पूछा है? अच्छा लास्ट तक पूछा, ओके। एक एक काम करेंगे पहले, फर्स्ट विल डू वन वन दिस एंड देन वी विल गो अहेड, ओके। आई वांट एवरीबॉडी टू सॉल्व प्रॉपर्ली। एक्टिविटीज लिखेंगे पहले, एक्टिविटीज फर्स्ट 1 to 2, 1 to 2, इसके बाद 2 to 3, इसके बाद 2 to 4, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 4 to 5, 5 to 6 और 6 to 7। ये हो गया आपका एक्टिविटीज एवरीबॉडी। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 2, 3, 15, 3, 12, 8, 3 और 12 और 12, ओके। एवरीबॉडी ओके टिल हियर? सबको यहाँ तक हुआ है? फ्री फ्लोट और लास्ट में आपका आएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट, लास्ट में आपका आएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट, ओके। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ रिवाइज कर देंगे अपन, ठीक है। नाउ कैन वी स्टार्ट एवरीबॉडी, कैन वी स्टार्ट एवरीबॉडी? स्टार्ट कर लेंगे अभी। नाउ प्लीज टेल मी वन थिंग, आपको इसके फुल फॉर्म तो पता है ना, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, टोटल फ्लोट। और एक बात मैं आपको अभी बोलता हूं कि आपको क्रॉस चेक कैसे करना है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी द क्रिटिकल पाथ, ओके। तो एक चीज है, आप ये आंसर यहां पे चेक कर सकते हैं, क्रिटिकल पाथ के सामने टोटल फ्लोट में 0 0 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 0 आता है भाई साहब आपका आंसर राइट है, ठीक है। चलो कैन वी स्टार्ट विद फर्स्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, एवरीबॉडी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। सो 1 to 2 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब क्या होता है, लेफ्ट वन नंबर, 1 to 2 का 1 का लेफ्ट देखना है आपको। व्हाट इज दैट सर? इट इज 0, ये 0। आपको लेफ्ट का लेफ्ट देखना है, लेफ्ट का लेफ्ट। 2 to 3, तो 2 का लेफ्ट क्या है 2, 2 to 4 का वापस 2 ही रहेगा, 2 to 5 का क्या है, ये भी 2 ही रहेगा। आपको लेफ्ट नंबर का लेफ्ट बॉक्स देखना है। 3 to 5 का, तो 3 to 5 पुट गया 3, 3 का क्या है भाई 5, 5। इसके बाद 4 का क्या है लेफ्ट, 4 का लेफ्ट क्या है 17, 17, 17। 5 का क्या है, 5 का 25, 25। 6 का क्या है 28। Everybody okay till here? Everybody okay till here? Have you completed EST? Have you completed EST? सबका EST खत्म हो गया क्या? EFT का मतलब क्या होता है? EFT का मतलब भाई साहब it is EST plus duration, EST plus duration, EST plus duration, EST plus duration. So 2 plus 0 2, 3 plus 2 5, 15 plus 2 17, ये 5, 12 plus 15, 12 plus 5 is 17, 17 plus 8 is 20, sorry 17 plus 8, ये हो गया 25, ये हो गया 28, और 28 plus 12 is what 40। क्या आपका ये हुआ है क्या? Everybody okay till here? Everybody okay till here? Now I have also told you one more thing, LST LFT में LST पहले मत करो, पहले LFT करो। How to do LFT? राइट का राइट, राइट का राइट, ओके। तो 1 to 2 का 2 का आपको जाके राइट का नंबर चेक करना है, 2 का राइट, 2 का राइट क्या है 2, ये 2 हो गया। फिर 3 का क्या है, 3 का राइट 13, 13। फिर 4 का राइट क्या है, 4 का राइट 17, 17। फिर 5 का राइट, 5 का राइट 25,
25, अगेन 25, अगेन 25, 6 का राइट क्या है 28, 28 और लास्ट 7 का राइट क्या है 40, 7 का राइट क्या है 40. सिंपल. आई होप यू आर डन विद दिस. ओके, व्हाट इज एलएसटी? ये हो गया इसका फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला क्या है भाई साहब एलएसटी का? इट इज एलएफटी माइनस ड्यूरेशन. इट इज एलएफटी माइनस ड्यूरेशन. एवरीबॉडी ओके टिल हियर? एवरीबॉडी ओके टिल हियर? अभी चलो एलएसटी अब निकालेंगे, एलएसटी निकालेंगे. एलएफटी माइनस ड्यूरेशन. So 2 minus 0, sorry 2 minus 2 0, 13 minus 3 ये होगा 10, 17 minus 15 ये 2, 25 minus 3 ये हो गया 22, 25 minus 12 ये हो गया 13, 25 minus 8 ये हो गया 17 एंड 28 minus 3 ये हो गया 25. टोटल फ्लोट के बेसिकली आपको दो फॉर्मूला है, LST minus EST और LFT minus EFT. I'll write it down over here. Two formulas, LFT minus EFT किंवा LST minus EST. Whatever you like, आप आंसर निकाल सकते हो. दोनों से भी आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है? दोनों से भी आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है? LFT minus EFT. 2 minus 2 0, 13 minus 5 8, 17 minus 17 0, 25 minus 5 20, 25 minus 17 8, 25 minus 25 0, 0, and this is also 0. Now please tell me whether क्रॉस चेक करेंगे अपन भाई साहब, क्रॉस चेक करेंगे अपना आंसर बराबर है क्या. पहले क्रिटिकल पाथ को अंडरलाइन करेंगे. ये हो गया क्रिटिकल पाथ 1 to 2, ये 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6 और 6 to 7. इसके सामने जीरो आना चाहिए. अगर जीरो नहीं है तो आंसर रॉन्ग है. ये आ गया जीरो, ये आ गया जीरो, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया. यू आर गुड टू गो. इफ यू हैव डन दिस, if you have done this on your own, you are on the right track. क्या मुझे आप कंफर्म करेंगे प्लीज कि आपका हुआ है क्या? कंफर्म करेंगे क्या उस क्रिटिकल पाथ के सामने आपका जीरो आया है क्या? क्रिटिकल पाथ के सामने आपका जीरोस आया है क्या? ओके, आई वांट एवरीबॉडी टू कमेंट यस और नो. फास्ट जल्दी करेंगे. अगर आया है तो मुझे बताएंगे आया है. अगर आप कर रहे हो तो मुझे बता कर रहे हो, ठीक है? if you are done with this, and remember if this question comes, it's a bonus question. ये सब bonus question है. टाइम लगता है, it is very lengthy, but it is a bonus question. okay, मतलब इसमें आप गलती कर नहीं सकते. इनफैक्ट आप यहाँ पे गलती पकड़ भी सकते हैं. ये अगर आपको रॉन्ग भी हुआ है ना, आप ऑन द स्पॉट चेक कर सकते हैं यार कहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो आप वहां पे ऑन द स्पॉट चेक कर सकते हो, ठीक है? हैज एवरीबॉडी डन? अच्छा, अगर आपका ये हुआ है फिर आगे जाएंगे स्लैक ऑफ हेड इवेंट, स्लैक ऑफ टेल इवेंट. ओके, मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बताया था, तो पीपल गेट कंफ्यूज ओवर हियर कि स्लैक कैसे निकालते हैं हेड इवेंट टेल इवेंट का. तो मैंने आपको ऐसे ही बताया कि अंडरस्टैंड ऑफ एनिमल स्टैंडिंग ओवर हियर, दैट इज व्हाट एक जोक मारा था मैंने क्लास में. तो मैंने ऐसे आपको बताया था की देयर इज अ असं काहीतरी काढलेलं मी, प्राणी काढलेला असा की एनिमल स्टँडिंग ओवर हियर अँड दिस इज योर हेड, दिस इज योर हेड एंड दिस इज योर टेल. इसके साथ शेपूट है, असं मी काढलेलं, ठीक है? तो आपको ऐसे अंदाज लगाना है कि आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस. इवेंचुअली एग्जाम के समय कभी कभार पैनिक होता है कि समझ में नहीं आता कि हेड क्या टेल क्या है. ओके, तो आपने वो थोड़ा सा भी कंफ्यूज कर दिया ना, वहां पे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो imagine an animal standing over there facing that hand side and this is the head and this is the tail. okay, तो भाई साहब इट्स ओनली फॉर फन पर्पस है बाय द वे. सो ये आपका हेड है, ये आपका टेल है. तो क्या करना होता है आपको स्लैक ऑफ हेड इवेंट में जाके, तो हेड आपका 2 नंबर का हेड है, तो प्लीज गो ऑन द नेटवर्क डायग्राम, 2 नंबर चेक करके वहां पे बॉक्स में, और जो 2 बॉक्स ना फॉरवर्ड बैकवर्ड, उसका डिफरेंस चाहिए. अभी आपने वो सिलेक्ट नहीं करने का लेफ्ट और राइट, उन दोनों का डिफरेंस चाहिए मुझे, ठीक है? तो स्लैक ऑफ 2 इवेंट 2 नंबर जाएंगे, 2 और 2 है. 2 और 2 कितना होता है भाई साहब? 2 और 2 कितना होता है? ये 0 होता है, ठीक है? फिर 3 नंबर का जाएगा, 3 नंबर का चेक करेंगे सर, 13 माइनस 5 कितना आता है सर? 8 आता है. 8, ये 8 आता है. फिर 4 नंबर चेक करेंगे, 4 नंबर 17 17 ये आएगा 0. मैं दोनों माइनस कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? 5 नंबर का क्या है भाई साहब? 25 25 25 25 0. 5 का ये वापस रहेगा 25 0, ये रहेगा 0. 6 नंबर का क्या है भाई साहब? 6 नंबर का 28 और 28 है, 28 और 28 ये भी 0 आएगा. और 7 नंबर का क्या है? 7 नंबर का भी 0 आएगा. आई होप यू हैव गॉट दिस, आई होप यू हैव गॉट दिस.
एवरीबडी ओके टिल हियर, एवरीबडी ओके टिल हियर, कंफ्यूज नहीं होने का हेड और टेल में, ठीक है। एनिमल स्टैंडिंग, हेड सामने टेल पीछे, खत्म हो गया बात, ठीक है। उन दोनों का जाके वहां पे डिफरेंस निकालेगा टेल। अब टेल क्या होगा सर, वन नंबर इज अ टेल, गो ऊपर, वन नंबर जीरो जीरो, तो ये जीरो ही हो जाएगा। फिर दो नंबर का क्या है भाई साहब, ये भी जीरो है, फिर दो नंबर ये वापस जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। तीन नंबर का क्या है, तीन नंबर का 13 - 5, 13 - 5 कितना आता है, ये आता है 8, ये आता है 8। फिर चार नंबर, चार नंबर जीरो, फिर पांच नंबर जीरो, ये भी जीरो आएगा। और छह नंबर का क्या आएगा भाई साहब, छह नंबर का भी क्या आएगा, ये भी आएगा जीरो। आई होप आपका ये हुआ है, आई होप आपका ये हुआ है। कैन यू प्लीज टेल मी, यहां तक हैज एवरीबॉडी डन, यहां तक हैज एवरीबॉडी डन, गिव मी अ यस और नो। दो कॉलम बचते हैं आपने, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, एवरीबॉडी ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्री फ्लोट एवरीबॉडी, आपको पता रहेगा फॉर्मूला क्या है इसका, सर इट इज टोटल फ्लोट, इट इज टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट, माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट, स्लैक ऑफ हेड इवेंट, ओके। तो भाई साहब ये बहुत सिंपल होता है, मतलब ये जो आपने निकाला है ना, इसका ही यहाँ पे आपको माइनस करना है, इसका आपको क्या करना है, नीचे माइनस करना है, एवरीबॉडी, ठीक है। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज आंसर, पट 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 पट, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, जीरो, 28, जीरो, 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 ओके। नाउ आई टेल यू व्हाट हैपेंस इवेंचुअली। प्रॉब्लम ऐसा होता है जब बच्चे इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट, नहीं बिल्कुल नहीं है वैसा। तो जो तुमने फ्री फ्लोट कॉलम निकाला है ना, आपको उसका ही यूज करना है। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज फॉर इंडिपेंडेंट फ्लोट, इट इज नॉट टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट, इट इज बेसिकली जो कॉलम तुमने निकाला ना फ्री फ्लोट, ये उसका ही आंसर है यहाँ पे। सो इट इज फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट, जो यूज नहीं किया अभी तक अपन ने, ठीक है। सो फ्री फ्लोट माइनस टेल स्लैक ऑफ टेल इवेंट, ये आएगा जीरो, 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 20, जीरो, जीरो, जीरो और जीरो। क्वेश्चन इज समाप्त, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन इज ऑल ओवर। लेट मी नो वेदर एंटायर टेबल इज देयर इन योर बुक और नॉट एज इट इज। एक बार क्रॉस चेक करेंगे क्या मॉडल के साथ, देखो ये आपका मॉडल भी वही आंसर देगा जो आपने निकाला है, आपका वही आंसर मैच करेगा, ये आपका मॉड्यूल है। काय वेडी लोक आहेत, काय वेडी लोक आहेत। इंडिपेंडेंट फ्लोट को हाँ बराबर, जीरो, 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 20, जीरो, 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 अपना वही आंसर है ना भाई साहब, अपना भी आंसर क्या है, तो अपना आंसर, हाँ अपना आंसर वही है ना भाई साहब, वी आर राइट, ठीक है। हैज एवरीबॉडी डन टिल हियर, ये सबका हुआ है क्या, ये आपका कॉलम दिख रहा है क्या, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही चेक करेगा, ये वाला कॉलम चेक करेगा एग्जाम में, ठीक है। हैज एवरीबॉडी डन टिल हियर, हैज एवरीबॉडी डन टिल हियर, गिव मी यस और नो फास्ट, अगर ये हुआ है आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो। एवरीबॉडी, एवरीवन, कैन प्लीज गिव मी यस और नो प्लीज, अब मुझे दे सकते हैं यस और नो, और एक अपने को वैरायटी करना है, और एक अपने को वैरायटी करना है। सबका हुआ है कि मुझे चेक करेंगे एक बार, फास्ट एकदम से क्वेश्चन ही करेंगे अपन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो वेदर यू आर डन विद दिस, सबका हुआ है क्या, सबको आंसर करना है यस और नो, एक नंबर, एक नंबर। इफ एनीबॉडी इज डूइंग, डू लेट मी नो, आई विल वेट, वी आर नो हरी, कुछ हरी नहीं है अपने को भाई, वी आर नॉट इन अ हरी, वी आर नॉट इन अ हरी। चलो नाउ क्वेश्चन में जाएंगे, 2 मिनट। कैन आई से वन थिंग, पे अटेंशन, did we draw network diagram, yes, did we identify critical path, yes, did we compute total float free for independent float, absolutely yes, will we get 7 marks, yes, एक मार्क भी कटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो नाउ सर और क्या है, और क्या है सीपीएम पढ़ते, ये तो हो गया ना पूरा, इसमें हो गया पूरा, नहीं भाई नहीं भाई, और भी है, और भी है, और ये है कि आपको ड्यूरेशन निकालना होता है, ठीक है। तो अब ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस में ड्यूरेशन नहीं दिया है, अगर कुछ क्वेश्चंस में ड्यूरेशन नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ता है। So there are 3 columns which they'll give you, okay? Pessimistic, optimistic, most likely. Can you please write down the answer to this? Duration is equal to TP plus TO, basically TO, sorry, TO plus TP
प्लस 4 टाइम्स टीएम डिवाइडेड बाय 6. डोंट गेट कंफ्यूज, क्या है ये टीपी टीओ टीएम, कुछ नहीं, सब दिया रहता है. O stands for optimistic, P stands for pessimistic, M stands for most likely. अपन वही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है. We'll do that question only. And duration is denoted by TE. इसको TE करके डिनोट किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपको बोला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दैट इज आल्सो सिंपल. दैट इज TP minus TO डिवाइड बाय 6. डिवाइड बाय 6. TP minus TO डिवाइड बाय 6. अगर वरायंस पूछा, तो भाई साहब वही TP minus TO divided by 6 square. Finish. Divided by 6 square. Divided by 6 square. Please update this in your book. Please update this in your book. Please update this in your book. Everybody, can we go ahead in next question? अच्छा, by the way, जब कॉपी PDF मिलेगा ना, आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, I know that. You can do one thing. I'll just go through the questions, okay? Why I did not pick up the previous question? Because it was very easy. बहुत easy था. अपने I wanted to do a difficult question first, which everything covers. तो December 24 जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसमें इन लोगों ने 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा और बहुत सिंपल था. तो उसमें इन लोगों ने टोटल ड्यूरेशन पूछा है, क्रिटिकल पाथ, EST, EFT, LST और टोटल फ्लोट. इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट नहीं पूछा इसमें, ठीक है. तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डायग्राम निकालना पड़ेगा, and you have to show them the entire working, which I think you will do it very easily, okay. फिर वापस एक सेम क्वेश्चन था मॉडल क्वेश्चन पेपर में, जो आई थिंक अपन ने अभी जस्ट किया है, वो सेम पैटर्न है, ठीक है. फॉरवर्ड कंपटीशन, बैकवर्ड कंपटीशन, क्रिटिकल पाथ, ओके. अभी अपने को एक क्वेश्चन ऐसा करना है जिसमें ड्यूरेशन दिया नहीं है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ. हाँ, मिल गया, क्या ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है. इट्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ओके. आई थिंक वी हैव डन इट इन अ क्लास में किया अपन ने शायद से. Tintex Limited, a construction company, has an opportunity to submit a bid for the construction of new apartment. ठीक है. आपको नीचे उन लोगों ने 3 कॉलम्स दिए, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक, ओके. दीज आर बेसिकली व्हाट, ये बेसिकली आपके क्या है, दिस इज बेसिकली O आंसर, ये O है, ये आपका M है और ये आपका P है, ठीक है. तो क्या आप मुझे 2 मिनट के अंदर, क्या आप मुझे इसका ड्यूरेशन निकाल के दे सकते हैं क्या? बिकॉज बाकी सब तो आपको पता है, यू नो बाकी एवरीथिंग, okay. Can you please compute duration and give it to me, because without duration आप कुछ नहीं कर सकते. तो क्या हम duration निकाल के दे सकते हैं, TP plus TO, so it is TO plus TP plus 4 times TM. Everybody please do it fast. TO plus TP 4 times TM whole divided by 6. चलो, into 4, 15 plus 25 divided by 6. क्या पहले का आंसर 20 आ रहा है? क्या पहले का आंसर 20 आ रहा है? एवरीबॉडी, हैव यू गॉट द आंसर 20 इन द फर्स्ट थिंग? क्या आपका आंसर 20 आएगा, यस और नो? फर्स्ट का 20, वेरी गुड स्वस्तिका. नेक्स्ट, 25 into 4 plus 20 plus 30 divided by 6. सेकंड का आंसर कितना आ रहा है एवरीबॉडी? सेकंड का आंसर 4 times TM. क्या आंसर 25 आ रहा है? 25 पूरा पूरा क्रॉस चेक करेंगे, पूरा फुल डू तो एंटायर थिंग. 10 into 4 14 6, इसका 10 आना चाहिए. 12 into 4 16 8 divided by 6, इसका 12 आना चाहिए. 6 into 4 plus 10 plus 2 divided by 6, इसका 6 आना चाहिए. और 10 into 4 plus 14 plus 6 divided by 6, इसका आना चाहिए 10. आंसर आके चेक करेंगे. 20 25 10 12 6 and 10. Have you got this answer? 20 25 10 12 6 10. This is how you compute duration, okay. And बाकी it is the same thing. नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है. And क्या पूछा इन लोगों ने और? क्रिटिकल पाथ, total float, free float of each activity, which I think you can do it very easily. That is what we have done right now, okay. So this is one type. ईशान आपका आंसर राइट है, वेरी गुड, okay. This is one type. मैंने इसमें सब कुछ लिखा है, बाय द वे. एवरी क्वेश्चन इज देयर इन दिस PDF. जून 23 एग्जाम क्वेश्चन का भी है, जून 23 वाला भी है इसमें, ठीक है. आपको वो भी मिल जाएगा, दैट आल्सो ओवर हियर, ओके. चलो, नाउ देयर वाज दिस वन क्वेश्चन, वन सेकंड. लास्ट वाला क्वेश्चन है ये. एक मिनट कुठे गेला, आत्ताच बघितलं. हां 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 हां.
ये एक पैटर्न है, प्लीज पे अटेंशन। नाउ यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, मॉडल क्वेश्चन पेपर December 23 सेट 1। नाउ इस पूरे क्वेश्चन में ड्रॉ द नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड टोटल ड्यूरेशन। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क डायग्राम। तो बिफोर अपन इस आज का सेशन बंद करते हैं, वी एंड इट, बट बिफोर दैट आई वांट एवरीबॉडी, जितने भी लोग देख रहे हैं, आई वांट एवरीबडी ऑफ यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर बुक। उसके बाद अपन ये उनका आंसर चेक करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, इन दिस एक्टिविटीज आर नॉट देयर 1 to 2 2 to 5, ऐसा नहीं है। तो इसमें प्रीडिसेसर एक्टिविटी दी है, यू नीड ब्रेन टू सॉल्व दिस नाउ, टू सॉल्व इट जस्ट ड्रॉ इट, ओके। सो कैन वी डू इट एंड देन वी विल एंड दिस सेशन, ओके। तो आपको प्लीज ड्रॉ करना है, आई विल वेट फॉर 5-10 मिनट्स, आपको जितना टाइम लेने का लो, पर आपके बुक में ये डायग्राम अभी चाहिए। December 23 मॉडल क्वेश्चन पेपर, नथिंग दे हैव आस्क्ड, दे हैव नॉट आस्क्ड यू टोटल फ्लोट, कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ नेटवर्क डायग्राम पूछा है और इतना पूछा है कि भाई क्रिटिकल पाथ कौन सा, इतना बताओ। 7 मार्क का क्वेश्चन है और शायद से वो पूछ भी सकते हैं आपको, ठीक है। सो कैन यू डू इट, आई विल वेट, कैन यू डू इट, आई विल वेट। एवरीवन, एवरीवन, सर सॉल्व कैसे करते वो तो बताओ, सॉल्व कैसे करते ये। तो भाई साहब सुनो, whenever this question is there, what is the meaning of predecessor, इसका ये मतलब होता है कि उसके पीछे कौन है। तो भाई साहब ए के पीछे डैश, इसका मतलब दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बी के पीछे भी कोई नहीं है, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, और सी के पीछे भी कोई नहीं है, तो भाई साहब वो भी स्टार्टिंग पॉइंट ही है। सो whenever you are drawing this, whenever you are drawing this diagram, make sure you understand the diagram कि exactly वो क्या है। तो अगर मैं ऐसा इसमें एक इवेंट डालता हूं, तो ये भाई साहब पहला हो गया आपका, ये हो गया ए, ये हो गया आपका, कुछ गलत है, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। ये हो गया आपके 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स, ए बी और सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। उसके बाद देखो क्या लिखा है, डी के पीछे ए है, तो आपको ऐसा लाइन यहाँ पे मानना पड़ेगा कि डी के पीछे आपको ए दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे मानो, ये यहाँ पे डी हो गया, तो डी के पीछे ऑटोमेटिकली ए आ गया। इसके बाद ई के पीछे बी है, ई के पीछे बी है, तो आपको यहां से आगे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा ई, तो ई के पीछे ऑटोमेटिकली बी आ गया। इसके बाद एफ के पीछे भी बी है, अब ये काम करना पड़ेगा, एफ के पीछे भी आपको क्या करना पड़ेगा, बी। तो ये थोड़ा बहुत स्लैंटिंग करना पड़ेगा आपको, ओके। यहाँ पे एफ करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका कौन था, ये कौन था, यहाँ पे ई था ना, ई वॉज देयर। नेक्स्ट जी के पीछे सी है, जी के पीछे सी है, तो एक काम करते हैं, ये आगे डालते हैं ऐसे, ये यहाँ पे जी डाल, जी के पीछे सी है। उसके बाद एच के पीछे डी है, वेयर इज डी नाउ, ये हो गया आपका एच, एच के पीछे डी है, ठीक है। उसके बाद आई के पीछे ई, आई के पीछे ई, वेयर इज ई, इज ओवर हियर, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ गया आई, ठीक है, आई के पीछे ई आ गया। जे के पीछे एफ और जी है, देखो अभी प्रॉब्लम हो गया, तो अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये उल्टा करना पड़ेगा। देखो अभी एफ और जी मुझे एक साथ चाहिए, तो व्हाट आई डू इज आई राइट दिस एफ डाउन, यहाँ पे एफ लिखता हूं मैं, यहाँ पे ई लिखता हूं मैं, और ये ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू हैपन, यू हैव टू सिट विद व्हाट, और डबल। अभी एफ और जी है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों एक ही साथ ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे एक ही साथ ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे ऐसा, ये हो गया आपका एफ और जी, और एफ और जी, अब जे के पीछे वो है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ से एक लाइन निकालूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा जे। तो आपको चेक करना है, जे के पीछे एफ और जी ज्वाइन होने कहाँ से, दोनों भी ज्वाइन होने, जे के पीछे एफ और जी, ये अपना पॉइंट खत्म हो गया। अभी के पीछे एच और आई है, अभी चेक करना पड़ेगा एच और आई का कुछ गलत, देखो यहाँ पे बहुत इजी है, तो ये क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा आपको ऐसा, ये हो गया आई, तो इसके आगे क्या निकलेगा आपका, व्हाट इज दैट, के, ये हो गया आपका के, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। फिर लास्ट में एक ही पॉइंट बाकी है, एल के पीछे के और जे है, एल के पीछे के और जे है, तो यहाँ पे ऐसा है, तो ये यहाँ पे इनको ऐसा ज्वाइन कर दो, ये लास्ट पॉइंट आपका हो गया, एंड दिस इज द एंड ऑफ अ डायग्राम, एंड दैट विल बी एल, दैट विल बी एल, यस। ये ऐसा डायग्राम आपके बुक में दिखना चाहिए। देयर विल बी सम इरेजिंग पॉइंट कि जहां पे आपको बैठना पड़ेगा, बट क्या आपके बुक में ऐसा डायग्राम दिख रहा है क्या? दिस इज फॉर 7 मार्क्स, ये 7 मार्क्स के लिए, समझ में आ रहा है आपको? डिड यू गेट दिस एवरीबॉडी? क्या आपका ये आंसर हुआ है क्या? हैव यू डन विद दिस? थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा, आप वापस भी कर सकते हैं, बट प्लीज ये करके जाओ। देयर हैज टू बी वैरायटी ऑफ सीपीएम PERT। एक तो अपना नॉर्मल क्वेश्चन आपने पूरा सॉल्व किया है,
एक ये वाला पैटर्न है और एक ड्यूरेशन वाला पैटर्न, ये तीन आपको सॉल्व करके ही जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन। और ये एक बार खुद प्रैक्टिस करो, आपको वापस बोल रहा हूं। हैज एवरीबॉडी डन दिस, यस और नो? क्या आपका हुआ ये? क्या आपका हुआ है? अच्छा, अब एक काम करेंगे, अभी तक अपन ने इसका ड्यूरेशन निकाला, ड्यूरेशन कितना दिया है इन लोगों ने, तो दे वांट द क्रिटिकल पाथ, तो वो करके फिर विल एंड इट। ओके, ए का कितना है सर? ए का 2 है। बी का कितना है? बी का 3 है। सी का कितना है? सी का 5 है। डी का 4 है, ये 4। फिर ई का 1 है, ई कुटा है, ई कुटा है, ये ई है, ई का 1 है। एफ का कितना है? एफ का 5 है, एफ का 5। जी का कितना? 8 है, ये 8 हो गया। एच का कितना? 1 है, एच का 1, एच का 1। आई का कितना? 2 है, आई का कितना? 2 है। जे का कितना? 4 है, जे का कितना है? 4। जी उठ गया, जी उठ गया तो जाएगा। हाँ ये जे है यहाँ पे, जे का कितना है? 4, ये 4 है। नेक्स्ट, के का कितना? 3 है, ये 3। और एल का कितना है? 2, ये 2 है। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको क्रिटिकल पाथ बताना है, जो आई थिंक आप आराम से बता सकते हैं। तो फर्स्ट, ए डी एच के और एल, व्हाट इज द ड्यूरेशन? 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, ये कितना आता है? ये आता है 12। उसके बाद बी ई आई के और एल, इसका कितना आता है? 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, इसका कितना आता है? 11। सी जी जे एल, इसका कितना आता है? 5 प्लस 8 प्लस 4, इसका आता है 17। और कुछ रास्ते हैं क्या? हाँ और भी है। बी एफ जे और एल, बी कितना है? 3, एफ इज हाउ मच? 5, जे इज 4 and that is 2, this is 14। 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, अच्छा ये 19 आता है। दिस इज योर आंसर। आपका आंसर आ गया क्या भाई साहब? ये आपका आंसर है। हैव यू गॉट दिस एज अ क्रिटिकल पाथ? सी जी जे एल, क्या आपका ये आंसर आएगा? दिस इज योर क्रिटिकल पाथ। दिस इज योर क्रिटिकल पाथ। एवरीबॉडी यस और नो? हैज एवरीबॉडी डन दिस? सबका आंसर आया है क्या? इस पैटर्न, ये आपको पैटर्न करना ही है, ये पैटर्न आपको करना ही है। आप कंफर्म करेंगे एक बार कि आपका ये आंसर हुआ है क्या? Please do let me know whether you are done with this answer. And have you got this critical path in your book? Have you got this critical path in your book? Can you please tell me yes or no? Everyone? Have you got this yes or no? Have you got this yes or no? Have you got this yes or no? आपको डायग्राम में थोड़ा तकलीफ होगा, डायग्राम में आपको देखना पड़ेगा। इवन व्हेन आई वाज ड्राइंग डायग्राम, मैं देखा नहीं आंसर, बट ऊपर नीचे करना पड़ेगा। एंड मेक श्योर प्रीसीडिंग है, ये तुम्हाला आज सॉल्व का लागणार आहे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये। ठीक है, दिस इज योर क्रिटिकल पाथ, ये आपका क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके चलो, आई होप यू आर लाइकिंग दिस रिवीजन सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड। द मेन आइडिया वाज नॉट टू टेक अ मैराथन, अब वही नहीं लेना था, नॉट टू स्ट्रेच इट फॉर 10-15 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस, वो नहीं होता इतना सैटिस्फैक्टरी। That's the reason we're doing this. If you're liking it, please do like the video. Please do share the video in all your friends. And please do wait for the next lecture also. कल और एक lecture रहेगा OPM का. Make sure जितने भी small है, कल का मेरा main focus रहेगा spare maintenance के ऊपर.
जो मेंटेनेंस का चैप्टर है, प्लीज डोंट मिस इट आउट। दैट्स द लास्ट चैप्टर ऑफ योर करिकुलम एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आज अपन डिमांड फोरकास्टिंग किया, शेड्यूलिंग भी कल और क्यूइंग ये दोनों भी कल ही करने वाले हैं अपन। सो मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन टुमारोज लेक्चर। ओके, तीन शेड्यूलिंग क्यूइंग हो गया, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, वो स्पेस वाला चैप्टर है, ठीक है। वो एवरी मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड एवरी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। मेक श्योर कि जितना मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इट इज मोर देन, आई एम कवरिंग द एंटायर स्टफ, बट जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आप प्लीज उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है। और संडे के दिन आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा लेक्चर रहने वाला है। ओके, चलो, that's it from me today. Thank you so much. I hope you have enjoyed it. Please do share the video and please do like the video and please do subscribe the channel if you have not subscribed yet. Okay, thank you so much. Have a great day. Please make sure you are completing this chapter today. आज ये खत्म करके ही सो रहे हो, ठीक है। आपको वही बोल रहा हूँ, ये टारगेट रखेंगे उसी दिन का आप चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। वापस ओपीएम ओपन भी मत करो। नेक्स्ट वीक ओके, ग्रुप 1 शुरू हो रहा है, लॉ इज गेटिंग, सो इफ यू आर गिविंग 2 ग्रुप्स, make sure you sit for law in the next week. Okay, chalo, thank you so much.